Hello, everybody. I hope you all are doing well. My laptop crashed in the last minute, so I'm using my phone for this session. I'm not sure if I'm audible correct properly. I'm not able to see you all. Quite a challenge. If you're able to hear me, please tell me that you're able to hear me. Yes, you're Yeah, you audible. are audible. There's a lag in your. Okay, there's a lot of lag. I'm not able to understand. Is my voice clear? Yeah, it's clear. Ah, are you able to hear me? No, right? So, Ojas, do you think you would like to take it ahead? Because this way, I don't think we can have a session like this. Do you think? So we can, can you try to switch from Wi-Fi to network or network to Wi-Fi? I have just done that, but still, it's all the same, I think, because I can't see you guys also properly. It's sporadic. Okay, extreme apologies. This technical glitch wasn't expected at all. My MacBook ditched me in the last minute. Um, I welcome you all to the Soulful Saturday with the 5 a.m. movement. Today we have the special sharing circle on the power of silence. So this week on Monday, we had discussed about silence as a habit, right? Silence is not just absence of sound, but it is a tool. Silence is powerful, right? So we wanted to know how how do all of you use silence in your life? What role does silence play in your life? Does it play any role? Are you able to have it in your life in any way? So this is all we want to discuss with you today. So before discussing or before talking anything, I want you all to dwell deep into silence. And for that, we need to go for a meditation, a short meditation. Am I audible enough to go for a meditation? Yes. Okay, all right. So Pala, can we have the music? I want all of you to please sit comfortably, find yourself a comfortable position. Sit comfortably and easily with your spine erect. And because I have network issues, I'm just going to shut my video, okay? So that you can hear me properly. Just find yourself a comfortable position and sit comfortably and easily with your spine erect, your palms facing the sky and kept on your thighs. Take a deep breath in and breathe out.
And keep taking long, deep breaths. बोलो. And please keep yourself on mute. Listen to the sound of the music. Take deep breath in. And breathe out. Just slowly watch your breath. With every breath of yours, go deep inside you. And see, what do you feel? Watch your breath. And feel the sensations in your body. What do you feel on your skin of the palm? Do you feel the air? Do you feel the sweat? What sensations do you feel on your palm? Is there a tingling sensation? Is there a heaviness? Now carefully listen to the music. Listen to the sound of the music. What various sounds can you hear? Can you hear the water flowing through the stream? Can you hear the beautiful instruments playing along? Listen to the sound of each and every note.
bit by bit, go within yourself and become one with the sound that you hear. And gently take your attention to your heart region, to your stomach, your knees, the toes, gently wiggle your toes. Bring your attention to your palms. Become aware of your palms. Wiggle your fingers and gently bring your palms together, rub against each other. Feel the warmth. Feel the warmth and place those warm palms on your eyes. Relax your eyes, relax your face, and gently open your eyes. Yes. Now that's peace, that's silence. Yeah. So one of my mentors have taught us that silence is the great teacher. And to learn its lessons, you must pay attention to it. It was said by Deepak Chopra. And so many great minds in the world have spoken such beautiful things about silence. We feel silence is the absence of something, but it's actually the most powerful instrument that we can use for ourselves and the world. Yeah. Silence is a source of great strength.
And it is also said that it is true wisdom because from silence, the best reply comes out. तो आज हम यही बात करेंगे कि साइलेंस हमारे जिंदगी में क्या रोल प्ले करता है, आप उसे कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से ये आपका स्ट्रेंथ बनता है, क्या आपने कभी भी इसको आपके एडवांटेज के लिए यूज किया है. So we would want to hear from all of you. How do you use it? Do you meditate? Do you sit quietly with yourself? For how long do you do that? Do you write something? Do you journal? Do you go out for a walk with yourself? कितना टाइम स्पेंड करते हो अपने आप के साथ? We often feel कि हम silent है when we are not talking. But we are there on our phone all the time. That is not silence. Silence is the absence of any form of communication, verbal, non-verbal, even not through gestures and eye contact, nothing. It is then that you can reap the advantage of silence. Yeah. Now I open the floor for discussion. And maybe I would like to go first. The silence का significance मैंने कब महसूस किया? So it was in 2019. I was going through a lot of क्या बोलूं, मेरे वर्क स्पेस में इतना काम था कि I used to work all the time, you know. हर वक्त काम होता था, and I was a program manager. I was working with a non-profit organization. So उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ था कि लोग छोड़ते जा रहे थे, and when people leave, the burden falls on you, right? So ज्यादा से ज्यादा काम होता जा रहा था, and then I suffered from cervical spasm. तो मेरा ये जो पूरा पार्ट था, I could feel कि इसके ऊपर किसी ने पत्थर, ब्रिक्स, पता नहीं क्या क्या डाल दिया है, and I couldn't move. मेरी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी. So at that time I understood कि हमारे अंदर कितनी सारी stress, fears, worries, anxieties and what not हम store करके रखते जाते हैं, and finally the body tells us through disease. Yeah, when you are no more easy, then when you feel diseased. Yeah. तो जब cervical spasm हुआ था, at that time I knew that कुछ गड़बड़ है मेरे lifestyle में. And I was telling one of my friends that, you know what, I want to go away from all of it. I want to go away. मुझे silence चाहिए. मुझे अपने आप के साथ रहना है. मैं नहीं चाहती कहीं काम पे जाओ. I don't want to talk to anybody. I don't want to see anybody. I just want pure silence. And my friend laughed. He said, you go to the Himalayas. And I think I really wanted it so much that after 2 days, the lockdown was announced. March 2020, it was that the lockdown was announced and I was stuck because I couldn't move. I couldn't take a flight back home. Delhi में मैं थी उस वक्त और मेरे flatmates जा चुके थे, so I actually got what I wanted, a whole house to myself. कोई आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था, मुझे ऑफिस नहीं जाना था, and there was pure silence. This silence was from outside, but what I also felt was a different kind of peace within. उस वक्त वो सारी छोटी छोटी sounds जो मैंने कभी notice भी नहीं किए थे, the sound of a bird, the sound of the tree, हवा का sound, उन सब के साथ एक अलग connection बन गया था because I had nowhere else to go. This is all I had around me. And because of my pain, I used to sit with my pain for hours. मैं पूरा दिन अपने कमरे में अपने pain के साथ बैठी रहती थी क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी बाहर. And I used to observe the pain कि किस वजह से ये हो रहा है, कहाँ से आए तुम मेरी body में.
And I used to speak with my own pain कि it is some energy जो मेरे body में store हुआ है, किसी वजह से ये सब हो रहा है. तो जब साइलेंस में आई यूज टू ड्वेल तो अपने आप आई यूज टू सी कि किस तरीके से पेन अपने आप रिलीज होता जा रहा था. पास्ट के पता नहीं कब का स्टोर किया हुआ वरी, एंजाइटी, दुख जो कभी बोले नहीं थे, चीजें जो कभी खुद भी नहीं पता था कि शायद इम्पैक्ट कर रही है, वो सारी चीजें निकल निकल के आ रही थी. And I had completely shut myself down from people. At that time, I also enrolled into an advanced meditation program, जिसमें मौन रहना था. उसका जरूरी था कि I am completely in silence. So that also added to the whole process. मम्मी, parents, किसी से बात नहीं, कोई बात नहीं, pin drop silence. And that's when I actually understood the significance of silence. कि किस तरीके से आपके अंदर छुपी हुई बातें निकल के आती है. Which is why it is said that silence is true wisdom and it is the best reply. आपको जब कोई जवाब चाहिए वो अंदर से ही निकलता है, chaos के बीच में नहीं. When you go within yourself, then that is when you experience the power of silence. तो तब से साइलेंस मेरे लिए इतना जरूरी हो गया है कि आई लव बीइंग इन साइलेंस. आई डिस्कनेक्ट वेरी इजीली. मैं डिजिटल डिटॉक्स लेती थी, व्हाट्सएप पूरा डिलीट करके रख देती थी. आई यूज्ड टू गो ऑफलाइन, नॉट टॉक टू पीपल. इवन टुडे आई वुड गो अपस्टेयर्स and spend some time with myself in silence because I need that. Otherwise, it's very difficult to function. I need to hear what is there inside me. And that's how my relationship with silence is. So I want to know कि आप लोगों का क्या है silence के साथ रिश्ता, and what do you do? How do you practice it? We all would want to know more about it. I would have personally greeted each and every one of you, but because I am not using a laptop, I'm on my phone. So I just welcome you all to the sharing circle with the 5am movement only on Soulful Saturday. We were really looking forward to hear from all of you. We got to know कि आप सब बहुत interested है इस topic को लेकर. तो चलिए सुनते हैं. Who would like to go first? Ojas. Palak, you please keep spotlighting and muting, unmuting everybody, please. Palak is co-hosting the sharing circle. Thank you, Palak. Hi. So, um, so first of all, thank you for this opportunity. I've been to many sharing circles, and यहाँ पे sharing circle start करने का भी like it was my thought कि करना चाहिए, but surprisingly this topic is something that has not been discussed in any previous sharing circle, and it's very close to me as it is to Tanvee as well. I'm pretty sure. I mean, I know. So it's क्या कहते हैं? Yeah, I also relate a lot to silence. Sorry, मेरा शायद sharing थोड़ा सा लंबा होगा because it's a topic very close to me. And similar to Tanvi, I also need a lot of downtime. I also prefer being silent for long periods of time during the day or for many days in a row. And some people who have worked with me have already noticed that कि मैं सबसे involved भी रहता हूँ, लेकिन अगर मैं गायब हो जाता हूँ तो वो भी हो जाता हूँ. And you know, I feel that part is really what makes me balanced, what makes me grounded. So पता नहीं, I have a lot to share. Maybe I'll take more than one opportunity to share. So I'll just make a few points. One is that I feel that many kinds of meditation, if not all, are ways to tune into the silence within. Even chanting भी हो तो आप बोल रहे हो लेकिन अंदर आपके silence बन रहा है.
but I personally prefer the kind of meditation which involves nothing. You know, सांस पे ध्यान दो, तो you are silent. That is one thing. There's one thing called a sound of silence meditation, जहाँ पे there is so much of silence that you can actually hear the sound. It's like a little ringing in the ears. It's like the sound of the earth, you know. So that, and then there are different, like, maybe retreats that I have been to. For example, Vipassana, which I know Tanvi also went to recently, and maybe some of you would like to share. वहाँ पे noble silence maintain करना होता है 10 days के लिए, which is like no talking, but also not any reading anything, no eye contact, no gesturing to people. So really going within yourself. And Vipassana I found in 2018 after, I hope I'm not speaking too much. I found Vipassana in 2018 after really craving silence and not being able to find it anywhere. Like, for example, India is a noisy country, but Canada इतना quiet country है, वहाँ पे भी कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, you know, because there are always some of the other person around, कोई टीवी देख रहा है, कोई बात कर रहा है. So, but I guess ultimately silence is inside you, you know, like if you can be silent within, then it doesn't matter how much noise you have outside. But of course, being in a silent zone helps. So I used to go like India mein idhar se udhar looking for some place where I can just find complete silence, to some retreat centers, things like that, until I discovered Vipassana. And फिर the best phase I had was in Dharamshala last year, where I was for 2 months. Similar to Tanvi, I was also having a spine issue, and I was not able to get out of my place. I was stuck in that place. मैं कुछ travel, exploration, trekking कुछ नहीं कर पाया. I was just stuck in my studio, but I had the whole space to myself. And छोटा सा kitchen था वहाँ पे, और एक बिल्ली आती रहती थी to give me company. That was my only human exposure. And I used to just listen to the sound of the birds all day and just be in total silence, like listen to some satsang. So that was the actual dream come true, you know, कि हिमालय में जाके शांति में रहना. Like that actually came true for me. And उसके अलावा, there's something I want to say, like on a different note, that uh, uh, actually we all run away from silence, because when we are finally silent, when the mind is silent, then it has to confront the emptiness inside, the void, the darkness. आपने अलग-अलग नाम से सुनी होगी इसको. And it's always there, and we're always trying to escape it with some kind of mindless activity or some kind of project or some kind of distraction. हम काम में बिजी होते, हम socializing में बिजी होते, हम मूवी देखने में बिजी होते. But when it comes time to really going to sleep and shutting down everything, there is a sense of emptiness that we all feel. And that is the silence. And I feel a lot of us avoid it because it's an uncomfortable space, because there are lots of secrets inside, which maybe we have suppressed. And that is also, I feel, the key to connecting with ourselves. Like, through silence, we can find our own truth. We can find our own meaning for our existence. आप चाहे जितना दूर जाओ, आप अपने अंदर के साइलेंस से एस्केप नहीं कर सकते हो. जितना भी, you know, you try to run away from it, distract yourself, go to a different place. And at the same time, if you want to find it, if you want to really connect within yourself and to that place which is silent, then no meditation retreat, no going to Himalayas, nothing can help you. कोई बाहर वाला नहीं help कर सकता है. It is, you know, it's about actually surrendering uh, to yourself and going within. So thank you for listening. बहुत लंबा बोला मैंने. Thank you. Thank you for sharing, Ojas. Yes, very true. The silence is always within us. और कभी कभी ऐसा होता है आप सबसे साइलेंट प्लेस पे हो, पर फिर भी आपके अंदर कोई शांति नहीं है, कुछ साइलेंस नहीं है.
So it's very important to connect with ourselves. Somebody has written on the chats, just a minute. Neha has written, silence is meeting our inner self. It's like asking our inner self to answer the solution of our problems, feelings, confusion, curiosity, etc. Yes. And when Varnika is very rightly saying that when outer noise gets silent, then only inner noise starts speaking. And sometimes we get uncomfortable with our inner noise. Yes, it is maddening. I came back from Vipassana meditation and I saw a few people could not bear the chaos and the noise inside them. And they have to leave. It was a retreat center, there was nothing you needed to do. खाना मिलता था, सब कुछ मिलता था, आपको सिर्फ शांति में बैठना था अपने साथ, कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ बैठना है, नेचर के बीच में रहना है, उसमें भी कुछ लोग नहीं रह पा रहे थे. So it is so difficult. Some of us, even I felt it, when you have to sit with yourself for 12 hours in a day, तब पता लगता है अंदर क्या क्या कचरा छुपा है और कैसी कैसी बातें अंदर है कि अपने आप के साथ you get surprised by yourself. Oh, ऐसा भी है. And definitely it's a very, it is like अपने आप के साथ मिलना. Okay, so who would like to go next? Please raise your hands. We have 52 people. So we would like to hear from all of you, okay? And I think we are going to exceed the time limit. But anyways, I'm sure you all are here to participate. Yes, kachra is the right word. I use that word a lot. So much kachra, yeah. Varnika. Hi everyone. Very good afternoon. Yes, silence. This is something which came to my life, that experiencing conscious silence last year in 2022. I was going through some personal phase in my life, which was really, which was, I won't say bothering me, but that would be a small word, जिसने मेरे अंदर से मुझको हिला दिया था. All the beliefs, everything which I was holding for so many years, suddenly everything started breaking. So and that time, it was something from the inside that I didn't want to talk to anyone. I was here, I stay alone in my place. I don't used to go home also. My like kuch kaam hai, bahut urgent hai, then I used to go because I wanted to be with myself, not doing anything, but just wanted to be alone. So that was something, I don't know why it happened. And then just I was discussing with one of my friends, and then she said me that why don't you consciously practice silence, like Maun Vrat, just for one day, because she used to keep doing it a lot of times. So just may, and then I read an article. She gave me an article that you read and you practice. Kuch rules hai, matlab rules as in like jitna kar sakte ho, but if you can get some guidance from here. So then usme tha that no talking, like no phones, no calls, nothing, no interaction, anyone. So just what I did is I got up in the morning and like 24 hours का मैंने पहला रखा कि just for one day. मैं सुबह उठी एंड उसके बाद लाइक आई फोन वोन सब साइड पे एक दिन पहले ही मैंने घर पे बता दिया था कि दैट आई वोंट बी अवेलेबल फॉर कॉल्स और एनीथिंग टुमारो, एंड नो रीडिंग, नो राइटिंग, नथिंग, जस्ट सिट एंड नो स्लीपिंग ऑल्सो, क्योंकि तुम कुछ नहीं करते हो तो तुम सो जाते हो. तो ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती सोना, बिकॉज इफ यू आर जस्ट observe what is going on inside. It could be your emotions, your feelings, your thoughts, or what, but just sit with yourself. And when I actually practiced it, it was not easy. It was सुबह मेरे दिमाग में जो thoughts थे दोपहर को completely अलग, and रात तक it was, what I observed is there was a lot of ups and downs, rush. Same person के लिए सुबह एक अलग तरह की feeling है, शाम को एक अलग तरह की feelings है. इतना jumping of thoughts चल रहा था. And I was crying in between. There was so many, and वो मुझे ऐसा feel हो रहा था that कुछ सफाई cleaning हो रही है. Because during the day, a lot of emotions were coming up and down because I was just with myself.
And then I tried a lot that I don't sleep during the day, or because वो हो रहा था, when I'm not doing anything, I was feeling tired and I was feeling sleepy. And bas I had my food, khana khaya, and just bahar gayi. I just took my lunch or my dinner, and I made sure that nobody's around, so that even if someone tries to talk, I won't be able to reply. And the next morning when I got up, there was sudden upsurge of energy. कि तुम रॉकेट ही बना लोगे, वैसा वो था. Because there was, then that was a realization कि जब हम नहीं बोलते हैं तो हमारे बोलने में कितनी एनर्जी जाती है. क्योंकि जिस दिन हमने नहीं बोला, so next day there was physically, mentally, everywhere I was feeling so good. एक तो वो accomplishment की खुशी थी कि I did something for the first time and I would successfully completed it. And then internally also I was feeling so happy and energetic. और actually उस दिन फिर वो कचरा वाली चीज मुझे वहां पे लगी कि क्या सोच रही थी मैं कल, मतलब why these things were. So one thing which I was able to understand that clarity नहीं है माइंड में किसी सिचुएशन को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, बिकॉज बहुत डिफरेंट थॉट्स आते हैं. कुछ एकदम से कुछ अच्छा कोई मेमोरी आई तो अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, कुछ बुरी मेमोरी आई तो सब इंसान यू आर जस्ट हेटिंग दैट पर्सन और दैट सिचुएशन. So there's not at all very clarity and stability inside. And what I did is then I started practicing it quite often, like once a month, that proper Maun Vrat, ek din. Then what I did is when I was fasting, then I did, so that body cleaning and mind cleaning happens together. And ye karte karte I got this courage to go to Vipassana, that I wanted to try Vipassana once. And that was quite I would say not life changing would be a big word, but बहुत ही insightful experience था वो मेरा. And I don't know बाहर लोगों को कितना difference लगा, but inside I was a very different person. I felt myself the way I was like 10-12 days before and after that, और वो उसका impact काफी महीनों तक रहा. Somehow I was not able to continue the meditations and what they teach, but impact is still there. It's been more than a year, and I still feel that that was one of the nicest experience of my life. My closed ones, my parents, nobody understood that क्यों इतनी तपस्या साधना करनी, क्यों मौन व्रत, why you are getting into all this. But actually that was a time जो relationship silence के साथ है, because उन 10 दिन में बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे सरफेस पे आती है, बहुत कि बाहर कुछ नहीं है. जब हमारे अंदर की आवाजें बहुत ज्यादा होती है और हम वो नहीं सुनना चाहते तो हम बाहर की आवाजों को बढ़ा देते हैं, so that to balance it out. But now you don't have a choice. There's no sound outside except the nature sound. And if you have been to Vipassana, तो generally Vipassana वाले बहुत nature वाली जगह पे ही होते हैं. There are no traffic and lot of people around. So that was or I used to talk to my teacher only during that time. Ki aaj I have been, so there's long hours of meditation and I have been crying for many hours continuously. I don't know, there was nothing in my mind, but just tears were flowing out. And I asked कि मुझे क्यों रोना आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ चल नहीं रहा है मेरे दिमाग में. So the teacher was like कि it's okay, just observe. This is something which was अंदर भरा हुआ है, तो वो निकल रहा है. So there's कोई जरूरी नहीं है उसके लिए कोई ट्रिगर हो बाहर से. Sometimes it's just overflowing is happening. So yeah, I would say वो cleaning हो गई थी. That was अभी तक तो उसके बाद, लेकिन वापस आने के बाद फिर I was not able to practice मौन व्रत again. So which I really miss doing it now. Let's see. Hopefully I'll start again. Thank you. Thank you very much, Varnika, for sharing. Yes, well said. ऐसा होता है कि जैसे अंदर से आप की क्लीनिंग हो रही है, एक टैप से सब कुछ रिलीज हो रहा है, everything is out and you feel a different kind of peace. You're not feeling sad during that crying. You're feeling like something is getting out of your system. Yeah. Yeah, it was. So it yeah, feels that like is one way, which is Maun Vrat. Yeah, that's what was happening. वो टैप में Yeah. कुछ अटका हुआ है बहुत टाइम से,
बट वो अटक अटक के पानी आ रहा है, वैसा फीलिंग होता है, एंड समवन हैज रिमूव्ड इट आउट, तो वो विद द फ्लो थिंग्स आर कमिंग आउट, वैसा वो रिलीफ था वो, इट वाज मोर दैट। Yeah. पूरा yeah बट झल अभी करके अभी निकल अभी गया, and then when you release that, I was saying like now it's yeah, been 1 year. so when you So अभी release that, after that when you think of it, you don't feel that pain. yeah, and isn't in this 1 year I felt after that कि अब Yeah. वापस से उसमें मुझे लग रहा है वो कचरा जमा होना शुरू हो गया है, so I need that cleaning again. Yes, it's a constant cleaning and healing process. It's a constant process. It's a lifelong process. So we all need to do that. There is someone has written, I fall asleep when I try to be silent. Okay, Preeti. She falls asleep when she tries to be silent. Anybody has got any tips for her? Anything to tell her? Who would like to go next? Who would like to go next? Palak, can you see if anybody has raised their hands? सारे साइलेंस में है तन्वी। अभी तो चालू हो गया। सब साइलेंस हो गए। Okay, Neha, please share. Hi Neha everyone. Chopra. Yeah. So like अभी तक तन्वी जी ने, ओजस जी ने and वर्णिका जी ने जो जितना भी कहा है, it was like कि अब मैं खुद सेल्फ में सोचने लगी हूँ कि the thing is I have never been on silent, means like this one, मैं वैसे तो बहुत कम बात करती हूँ, in group also everybody knows कि मैं बात ही नहीं करती हूँ, बट हाँ बट दिस टाइप ऑफ साइलेंस आप लोग की बातें सुनने के बाद इट्स लाइक कि ओजस जी ने भी कहा था कि हम इग्नोर करते हैं उस पोजीशन में पहुंचने के लिए, तो मुझे लगता है कि मैं इग्नोर ही करती हूँ, अभी तक इग्नोर ही करी हूँ कि टू रीच दैट साइलेंस, और कोशिश भी करने के लिए कि ना कि थोड़ी देर अपने साथ बैठ के थॉट प्रोसेस को वो सोचना, मुझे लगता है मैं बहुत, इसलिए मैंने वो लिखा ना कि ये जो पोजीशन जो लिखा है मैंने, कंफ्यूजन, ये सब दे ऑल आर इन मी, मैं अभी हूँ, मैं साइलेंस की तरफ गई ही नहीं हूँ, तो आप लोगों की बातें सुनने के बाद आई एम थिंकिंग कि आई शुड ट्राई, एंड आई एम थिंकिंग कि नाउ आई विल स्टार्ट, बट अभी इट्स लाइक कि आई हैव 2 सन एंड अभी काफी यंग है हम लोग, तो दिन में तो आई हैव नो टाइम एंड नो चॉइस ऑल्सो, so maybe early morning or maybe after night I will try to have half an hour, 15 minutes or whatever, I will try, because आप लोग के experience सुनने के बाद I am eager to try it. Yes, you can start with very little amount of silence, 5 minutes, 10 minutes, धीरे धीरे it will get expanded, and you know what is most important I have seen is the quality of silence. अब कभी कभी हम 1 घंटा बैठते हैं, पर उस 1 घंटे में भी हम एक्चुअली साइलेंट नहीं हो पाते हैं, कभी कभी 5-10 मिनट ही काफी हो जाते हैं. So you please start practicing it. It will be amazing. Yeah, I will. All right. Thank you, Neha. And to Preeti's question about falling asleep, Narsimha ji has got something to say. Narsimha ji, आप please अपनी experience share कर सकते हैं हमारे साथ. He has been practicing मौन व्रत, silence fasting, और हम चाहते हैं कि आप प्लीज आपकी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. लोग करना चाह रहे हैं फास्टिंग, साइलेंस रहना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? Actually, I have not practiced any retreats silence, but I will share some my experiences what I feel now. But first of all, I am happy to see you back, Tanvee, after a long time. Welcome back. And mute pen. Thank you. Very good to see you all. Thank you. Actually,
in my perspective, actually silent means actually whenever we are in full turbulence also, we should be able to feel that silence undercurrently always. Whatever you do, the activity, whether we are attending the session or some meeting pair, some calm pair, dancing with we are dancing with high beats also. That silence should always be there in the underlying like that, right? Actually, that mainly what now was as he said, na, like that. It completely depends on our mind, right? Not whether we are sitting somewhere in isolated place or we are going to some calm place or sitting. But okay, actually, all those are there are some pathways or process to experience that silence, but that itself is not a silence. Silence means it is mostly like when we are content enough with ourselves. Yeah, actually, that is also one part of the silence. Actually, we feel that content. When we are content, then we will feel that silence in us. We don't bother for anything. When actually, Preeti is asked just now one question. Preeti Pandey and like something. How to practice silence? First, actually, for us, if you want to know about good, we should know about bad first. Then we can experience, we can enjoy that good. Like that, now. If you find out what is the disturbance that is causing to you or turbulence in you, if you can identify that one, then we can keep away from that one. Automatically, we are moving towards silence. Knowingly, actually, we can't see silence, right? But we can see the turbulence or disturbance. When we are can't able to see God, first we should see the devil. Oh, then we can see whenever we find the God, oh, pleasant receive karta hai, oh, love karta hai, oh, caring karta hai. Then actually we can find that one difference. Then we can enjoy that. Actually, some people they don't know actually really what is the but we are some people we are also I myself also sometimes we keep on searching for silence, doing some practice, but we should develop our mind, train our mind or our mindset in such a way that we can be in silence anytime, at any day, any time means what kind of situation maybe we should be silent. Okay, that should be our prime nature. Okay, when you start loving people, sharing people, actually it will use a lot of silence to you, but you don't know that one. Some people they may not know knowingly, but undercurrently you are closely moving towards silence. You can actually, if you start observing that one, you can feel that silence in you. If you are fighting with someone or if you are going against your will or woman kuch ka bol raha hai, but you are doing something else, well, whatever may be that temporary benefit or reaching the goal or winning the game, anything, na? But finally we will not be silent. So always better to be content with ourselves, whatever is available with us. Or actually, we are all lucky people. Fortunately, we are having enough in our lives when compared to, and if you compare all the people around us, but still we are searching for something. Oh, I want that one. I don't. Then you are creating yourself some turbulence, unnecessarily disturbing your life. I mean, like that we should not. Okay, we have to try ourselves to for better living or better achievements, everything. But it should not be at the cost of your silence. Your silence will be the primary aspect for you. Then only you can spread that fragrance to your family, your partners, your children, your
friends, everything, everybody around. Actually, it is like a contagious disease. Once you really feel that silence and share that, actually it is like a aura. It will keep on spreading from one people to other people. But that other persons also should be a little bit aware of that one. Okay, they should be able to recognize the pleasantness in you. When you feel that pleasantness, automatically silence will come. Actually, it is completely related to completely 100%, 100 to 200% completely related to your mental status. If you go to the top of the hill and sit silently, keeping your eyes closed, with nice breeze coming and cool climate, still you don't feel silent, right? Something is going on inside. Some disturbance is there with our partner or with our family person, so children, something like that. First of all, you should identify that one and clear that one. Whatever is possible, you have to do. But if it is beyond our limit, we are just normal human beings. Okay, we should not expect miracles, overnight miracles like that. Whatever is possible from our side, we will try our best. Then actually, it is not beyond your limit. You should not think about it. You leave it. Then it's sorry. Then you will find that silenceness, what we may call it as a truthfulness. We should be always try to be close to that truthfulness. Whenever we are, sometimes because of necessity or based on situations, we may tilt to some deviation. But always better to try to yourself, to try to truth yourself. Then, if anything, if some atom bomb falls and beside you, also you will not feel something disturbing you. Okay, if it is there, if it is time came for us to leave this, okay, it's okay. Why to bother? Anyhow, if you bother also, it will not stop, na? Like that, actually, what I feel is like that we should always try to be truth to ourselves and always try to love the people and share the people. Actually, you should share the people also. Then only they will come to know that we are loving them. If you many times what will happen in our cases, we will keep all emotions inside. If you love the people also, but we don't tell. Okay, we will there someday we will meet and we will share. I am not telling about love means between youth. Everything. If you want to share with your mother or family or some friend, everything. What we will do? Okay, actually we will keep. Okay, now not now. We will tell some other time. Like that, we will keep on post, but it generally happens. But that should not be. Actually, it is giving burden. You have love inside, but you are not expressing. That is burden. If your burden is there, it will not keep you silent. Similar way, when we have some angry on somebody or some negative feelings and something negative feelings, you should ventilate that immediately. Actually, you should calm down that one and not calming them. We should be in a situation that we should not get angry. But if you are not that much mature or that much not to that level, you still got some angry, just you ventilate it. Don't keep inside, and it will burn your mind like a fire. That fire should not be there inside. It shall should be cool enough. And actually, I will share today's my experience. I went today. We have a general body meeting. Just now I come in from there only. General body meeting means all politicians will come. They will come and they will ask all the requirements to the employees, government employees. Actually, whatever they have, the frustration, everything, they will come up with all these bundles and they will pour on that meeting on the employees. They will shout anything, they will talk anything. Actually, today when actually my department updates also came, and I think I am taking more time.
Tanvee, I think I am taking more time, So you can right? go ahead. Think. Okay. Yeah, so you can finish this part and then we will go ahead. Yeah. Yeah, okay. Actually, I am just gave my department updates and I just asked for okay. We will ask at the end. Okay, any doubts, questions, please ask like that. Huh? Immediately, one fellow stand up and he is asking, yeah, from the last 3 years, you are not giving any services to uh, people from your department. वो नहीं देता है, ये नहीं देता है, ऐसा actually is gussa against the system, not on me or actually you all know that AP government, Andhra government state now actually we are lacking money, okay, because our state divided, that's why the all funds cut. Previously we used to give many subsidy based all free services to these people. Nowadays from last 3 years we are not giving. But all the frustration, he suddenly wake up and between all in that auditorium, he took mic and he shouting, hey, Sab, you are not doing that one like that. Okay, then I took I have to reply, right, for all these people. Then I took the mic. Yes, brother, what you told is correct. We are also feeling like that only. क्या करता है वो बजट नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट का मामला है ना, वो बजट सेलेक्ट कर सकते के we can do, but actually this time at higher level they are planning to allot budget for this one. Like that, actually I even though he talked very ferociously and gussa mein, I don't feel anything. Actually, that is his wish. It should not disturb me. Whatever is fact, I have what I can do. Whatever is available resources, I can deliver that one, right? This is the actual situation. Like that, I explained him just for 2-3 minutes. Immediately, he got pulled down. Sorry, sir. I don't want to blame you. Actually, सभी लोग ऐसा पूछ रहे हैं. As I am a public representative, I have to bring to your notice. That's why I am shouting like that. Please don't mind, sir. Like that, actually I don't know that person also, but he became a friend, and we both after lunch, after session, we both went to dinner or lunch arranged. They are talking actually. No. Why am I taking this much time? Whenever other person opposite, if they are firing up or they are talking something negatively or something scolding us, we should not disturb. Okay, there are some words. Okay, it should not disturb you. Whether that is bad word, what we do, if it is a nice word, we will laugh and we will feel that person is my close friend. Otherwise you will read, hey, like that. That should not be there. Whether he is telling favor of us or whether it is our duty is just representing our department activities. That's all. If he scolds me, then I will not actually. There I have. If he scolds me, there Narsamma is not receiving that. That agriculture officer, he is the receiving that scolding. So I am not the person, right? I am just in charge of that chair only for this period. I may move to some other place later. Like that, actually, we should take to that level. Then It is just the role. Yeah, that is just the role. Like that, we should feel everything. We should feel okay. I am the father. Yeah. Do this much only. Don't expect me more than this one. I am a wife. I am a husband. I am a child. I am a father. Like that, everything we should know our limits, our capacity. That means I am not minimizing the capacity. Whatever we can do, we have to do. But beyond, if they are expecting also, we should tell. Yeah. Actually, I will give one small tip. It may be useful for Kamal Bhai. It's a small tip. So sorry for taking Tanvee the other time. Actually, when we married, actually, मेरा वो महिमा जी का वो घर वाला है ना, वो सभी वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे.
Everything they are expecting too much. I am what you are, these people are too much expectation. If I am going like this, I can't live my life. मैं वो क्या क्या वो ट्रैप में I will drop in that catch. I don't. I'm waiting, not getting proper word. वो ट्रैप में जाएंगे. Like that, I told. Okay, this is my limit. I फंस जाएंगे. clear my actions. I told. Okay, this is my limit. Don't expect beyond this one. Then actually in the initial stages they felt bad. But this fellow, not like what we expected, is something different looking like that. But later on, actually finally it's our life, right? Everything is fine now. Actually they are very happy. Everybody is happy. That means we should not give more expectations Yes. also to. Yeah. Okay, much only I can do. Just you go, please adjust. Try to Yeah. think this much enough like that. Like that, always whatever we do, actually Okay. our silence depends on our actions, little actions only, right? We always mind our actions. Actually, Yes. and okay, fine. I'm finishing my Basically, you're conversation. saying that basically you're saying your connection with yourself, right? The calmness within. वहां से जब आप चीजों को respond करते हो, then it works out better, right? Yes. Actually, Yeah. we And should the relationship जो आप अपने आप but- के साथ share करते हो, not on expectations of others. Yeah. Yeah, actually, Yeah. we can respond to Thank anything. you. That is Thank beyond you of, very much. Tanvee ji, finishing anyhow. Yes. ज़्यादा बात किया ना, I will finish with one word, one sentence or one paragraph. Yes, we want to Sir, give sir, others Narsimha ji, chance as Narsimha well. ji, One we paragraph. need to give other people chance. सर मुझे भी बोलना है नरसिंहा सर You मुझे can- भी शेयर करना है हाँ. You have to bear with me. I forget actually. Okay. Yes. What I actually we have the Sir, unlimited Narsimha ji, we need to give other people chance, sir. We can come back to you later, but finally, only one sentence. Actually, we have the capacity to respond unlimitedly. Okay, right? But we have the limitation for reacting. Okay, we always try to find out our the difference between our reaction and response, respondingness, so that we will be more calm towards our actions. We should not react to the situations where we need only responding is required. This is our beyond our limit capacity to react. Okay, like that. Thank you, Tanvee. I'm actually, if you are Thank you very much, Narsimha ji. Yes. Thank you. Tanvee, just now also you can observe. You all are forcing me to stop. But I am very silent. I am keep on going with my flow. That is what is required with us. Okay, thank you very much for the opportunity. Thank you very much. Thank you. It is 3:34 p.m. and many people have left already. So I would like to do our ritual. Let us all turn on our cameras. Let us have our selfie, and then we will continue with our discussion. Okay? Palak, can you take the selfie? Yeah. Are you Everyone, there? please turn on your. Yeah. Yeah. And what? Okay. Yes, sir has suggested. And what pose will we put? Selfie pose. Siddhi ji, before Chup, leaving. silence. Okay. Finger on your. Okay, everyone, turn on your cameras. I'm waiting. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Okay, thank you. Thank you very much. Now, who would like to share next? Who would like to go ahead? Monari didi कह रहे थे. Yes.
आई वांट टू शेयर. तन्वी बोलेगी उनको, उसको पता है मोनाली कुछ ना कुछ मोनाली, शेयर करती है. बट या इट्स साइलेंस एक्चुअली सबसे ही रिलेटेड होता है कि सबको लगता है कि मैंने यस, शांत रहना चाहिए, बट हम नहीं रह पाते हैं. तो मेरी सिचुएशन बताऊंगी कि जब मुझे ट्विंस डिटेक्ट हुए थे तब मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे 3 बच्चे होंगे ऐसे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे एक डॉटर थी. और सेकेंड टाइम जब मुझे ट्विंस डिटेक्ट हुए तो मेरे साथ मतलब वो भी मेरे लिए बहुत शॉकिंग था. और मेरे को सिटी भी चेंज करनी पड़ी, मेरे को इन लॉज के पास शिफ्ट होना पड़ा था. तो ये दोनों चीजें मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि मेरा यहाँ पे बिजनेस था वो बहुत अच्छे से चल रहा था, मेरी बेटी की स्कूल थी, तो सब छोड़ के मुझे जाना पड़ा वहां पे मेरे ससुराल में. और वो भी मेरे हस्बैंड यहाँ पे रहने वाले थे पूना में, और मैं वहां पे उनके पास रहने वाली थी, मेरे सास ससुर के पास. तो मैं बहुत डिप्रेस थी, मतलब मैं 4 महीने पूरी शांत हो गई थी. शांत मतलब अंदर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, बट मैं किसी के पास एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी ये सारी चीजें. फिर जब मुझे ट्विंस हुए तो दोनों बहुत हेल्दी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया. बट प्रॉब्लम ये था कि वो सोते ही नहीं थे रात में. रात भर वो दोनों भी रोते थे, और एक बहुत वीक था तो उसके हेल्थ के इश्यूज भी बहुत होते थे. और मुझे पता नहीं, मतलब अभी बहुत सारी मॉम्स ये क्वेश्चन डाल रही है कि बच्चों को संभालते संभालते हम शांत नहीं रह पाते हैं, बच्चों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो सेम मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मुझे तो मेरी बेटी को भी देखना था और दोनों बच्चे भी देखने थे, और मेरे हस्बैंड भी मेरे पास नहीं रहते थे. तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी और बहुत चिड़चिड़ करती थी. और चिड़चिड़ मैं किसी पे नहीं कर पा, मतलब दूसरों पे नहीं कर सकती थी, तो मैं अपने बच्चों पे करती थी. मतलब जो वो रोते थे तो मैं उनपे गुस्से से कुछ भी बैड वर्ड बोल देती थी, मेरा बिल्कुल टेम्पर आउट रहता था. मुझे बहुत दिन भर भी मैं ऐसे चिड़चिड़ी रहती थी. और बहुत सारे इश्यूज थे, फैमिली इश्यूज भी थे, तो वो सारी चीजों में से बाहर नहीं निकल पा रही थी मैं. तो एक बार मेरे हस्बैंड आए हुए थे, और ऐसे ही रात को मेरे बच्चे बहुत रोने लग गए. तो मैं बहुत एकदम गुस्से से उठी और मैं उनको कुछ तो भी बड़बड़ करने लग गई है. तो मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया था उस टाइम पे कि ये अपने ही बच्चे हैं, बोले तुम उनको अगर बैड वर्ड बोलोगी, बोले तो उनको किस पे ट्रस्ट रहेगा, बोले ऐसे. तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया था कि हम माँ बाप है तो हमको ये सब चीजों में से जाना ही पड़ता है, और अगर हम उसको शांति से और हैप्पीली अगर फेस करें तो बच्चों पे भी वो असर होता है, और बच्चे भी वही ग्रास्प करते हैं जो हम उनको देते हैं. तो तब से मुझे सच में रियलाइज हुआ कि मैं कितनी गलत कर रही हूँ एक्चुअली खुद. और वो बच्चे जो समझ भी नहीं पा रहे हैं कुछ भी, 3-4 महीने के बच्चे, उनको इतना चिड़चिड़ कर रही हो. मतलब एक बार तो मैं इतना गुस्सा हो गई थी कि मेरा हाथ उठ गया था मेरे बच्चे पे, क्योंकि वो सोता ही नहीं था रात भर. और मैं इतनी डिप्रेशन में थी जब भी, क्योंकि काम नहीं होता था मेरे से, कुछ बहुत सारी गलतियां होती थी, मतलब मेरा माइंड सेट ही नहीं था बिल्कुल. तो फिर धीरे धीरे जैसे हमारे जो गुरु रहते हैं वो भी साइलेंस का इम्पोर्टेंस बहुत समझाते हैं. क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम बोलते हैं किसी को, बहुत हार्शली बोलते हैं या रूडली बोलते हैं, तो हम कर्म बांधते हैं. मतलब ये कर्म हमको भोगने ही है, ये जन्म में या नेक्स्ट जन्म में. तो हम बोल के किसी को मत दुखाओ, मतलब हम कोशिश करो कि हम शांत रहे. और शांत ऐसा रहे कि मन ही शांत करो, तो मुंह से गलत वर्ड नहीं निकलेंगे. तो मन शांत करने के लिए जैसे आप अपने आप को एंगेज रखो, आप अपने मतलब आपको अगर किसी पे गुस्सा है तो वो चीज थोड़ा इग्नोर करो, अपने आप को बिजी रखो हॉबीज में, या वॉटेवर जो आपको चीजें पसंद है वो चीजें करो, तो आपको अच्छा लगेगा. तो मैंने भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा गुस्सा पूरा शांत हो गया था या वॉटेवर, बट मेरी इम्प्रूवमेंट बहुत हो गई थी ये चीजें धीरे 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 करके. तो अभी भी ऐसा है कि मुझे, मेरे बच्चे बहुत शांत है अभी, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते. ऐसा थोड़ा बहुत तो मस्ती करते रहते, पर मुझे उन पे अभी गुस्सा नहीं आता जितना मुझे पहले मेरा माइंड सेट था. कि मुझे ऐसा मुझे लगता था कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मुझे ट्विंस क्यों दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था ये वो. बट अभी धीरे धीरे इतना माइंड सेट हो गया ना, और इतनी शांत रहती हूँ मैं, बहुत इजीली लेट गो कर देती हूँ चीजों को. क्योंकि जैसे हम मेच्योर होते हैं उतनी हमें पेशेंस लेवल भी बढ़ता जाता है. और 3-3 बच्चे संभाल के तो मुझ में बहुत पेशेंस आया है.
और मैं अभी 5am के थ्रू मेरे हॉबीज भी मैं मतलब दिखा सकती हूँ, मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ। तो मुझे एक अपने आप में एक अंदर से भी हैप्पीनेस आता है और मुझे एक शांति मिली है वो चीजें से, जो योगिनी जी ने आज मुझे बोला था कि आपने सेशन स्टार्ट करने चाहिए। तो मुझे ये यहाँ पे भी सेशंस लेके बहुत शांत लगता है मन में, मतलब मैं बोल नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी होती है जब लोग रिप्लाई करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो ये एक शांति मिलती है और उसका जो रिएक्शन है वो घर वाले मतलब फैमिली मेंबर्स पे भी दिखता है। तो दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस और मैं बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। तो माँ बाप बनना है तो आपको ये सारी चीजों से जाना ही है और आपका दिमाग शांत रखना ही है, अदरवाइज बच्चे भी आप पे वैसा ही रिएक्ट करेंगे। तो यही मुझे कहना था। और मैं आज का भी शेयर करना चाहूंगी कि आज मैं 4 बजे उठी थी और रात को मेरी नींद पूरी डिस्टर्ब थी, क्योंकि जब मेरा सेशन रहता है मेरे को रात भर नींद नहीं आती है। मतलब मुझे ये डर रहता है कि मैं सुबह अगर 5 बजे नहीं उठी तो मेरे सेशन का क्या होगा। तो इसलिए मैं रात भर भी नहीं सो पाती। और 4 बजे उठ के 5 बजे का सेशन हुआ, बहुत अच्छा सेशन हुआ, बहुत मजा आया आज। उसके बाद मैं साइकिलिंग करने गई, हम सैटरडे साइकिलिंग करने जाते हैं, तो हम 2 आवर्स साइकिलिंग करने गए थे। तो मैं ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टेड थी और मेरे हस्बैंड का टिफिन बनाना था, बच्चों का करना था, सब कुछ था। बट मैंने तन्वी को बोला था कि मैं एक माइंडफुल एक्टिविटी लेना चाहती हूँ। तो मैं सोची, वो मुझे तन्वी बोली कि अगर टाइम मिला तो ही मैं कराऊंगी, पर मैंने सोचा कि चलो मैं आज थोड़ा सा बहुत ज्यादा मेरा हेक्टिक रहा शेड्यूल, तो ये मैं खुद पे अप्लाई करके देखती हूँ। तो मैंने आज वो एक्टिविटी की। एक्चुअली वो एक्टिविटी ये थी कि आपको सिंपल ड्राइंग करना था। तो मैं 12 साढ़े 12 बजे से ये सब करने में लगी हूँ। तो अभी तक मैं एकदम हैप्पीली साइलेंटली ये कर पाई हूँ। तो अभी मुझे लगता नहीं कि वो मैं आपसे करा पाऊंगी, बट मैं आपको पक्का दिखाना चाहूंगी कि मैंने कुछ ड्राइंग्स निकाले हैं जो माइंडफुलनेस के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग भी ट्राई करना अगर ऐसा हो सके तो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेस रिलीफ करता है। तो ये मैं आपको लगे तो अकाउंटेबिलिटी ग्रुप पे भी शेयर करूंगी। तो ये सारे सिंपल सिंपल चीजें एक्चुअली बहुत अच्छा काम करती है। तो आप लोग भी ये सब ट्राई करिए। ओके, शायद मैंने भी बहुत टाइम लिया, सॉरी नरसिंहा सर, सॉरी तन्वी। बट ये एक्टिविटीज Thank you मुझे very दिखाना much, था। Monali. Thank you. Thank you very much. So, Monali, nice sharing. For those who are actually asking कि silent नहीं हो पाते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं. So, what Monali is saying is that try to find activities and things to do that brings the silence inside you. And as she has said, कि many of the people here are they have children. और घर में आप जब होते हो तो ये पॉसिबल शायद नहीं होता साइलेंट मिलना. मैं ही बता सकती हूँ that I am in staying with my family now, and today because I had a sharing circle, I thought मैं सुबह से साइलेंट में रहूंगी. And I could not manage to get 1 minute of silence. कुछ ना कुछ kept on happening. So that's why maintaining that inner silence is very important. What you do is very important. हो सकता है ड्राइंग करने से आपको अंदर शांति मिले, चैंटिंग करने से आपको अंदर शांति मिले, कुछ वक्त डीप ब्रेथ्स करने से शांति मिले. So whatever works well for you, that you have to find out. और धीरे धीरे करते करते you will develop that relationship with yourself, and then you will be able to be more in silence and peace with yourself. So thank you very much, Monali. And just here, I just want to say that we are the 5am movement community. We are the community who wakes up early in the morning. We all are into healthy habits and healthy lifestyles. हम हर सुबह 5 बजे उठते हैं और 5 बजे से 5:30 बजे we have sessions where we have movement, mastery session and meditation. And on weekends, we have special sessions at 2:30 p.m. जैसा कि आज आप attend कर रहे हैं. We also have special mental health sharing circles on Friday at 2:30 p.m. तो अगर आप लोग 5am movement के part नहीं हैं, the broader community is called the Alive as One. अगर आप हमारे community के part नहीं हैं, तो please join us. हमारी communities के link chat box पे दिए हुए हैं, and join our WhatsApp community and stay connected with us. All right. Now next. कल योगा सेशन है एंड बाय कमल सर एंड उसके कल बाद भी सुबह 5 बजे. या सो सुबह Yes. 5 बजे का योगा सेशन है और 2:30 बजे गेम्स है, ब्लू पर्पल वर्सेस येलो. तो जो भी नहीं है टीम्स में, फिल द फॉर्म ASAP.
और टीम्स की तैयारियां शुरू हो चुकी है। एंड अगर जो पहले गेम्स खेल चुके हैं सबको पता है हम कितने कॉम्पिटिटिव हैं, तो जितना जल्दी टीम्स में ज्वाइन करोगे आप उतनी जल्दी आप अपनी टीम को जिता पाओगे। इट्स अ बैटल, it's not game, and it would be hosted by Ojas and Alisha. So I hope you are ready for the games. After the session हम काफी planning करेंगे कल के लिए. Yeah, I think Tanvee has a bit of network issue, but yeah, And okay. ready for the games, right? And for tomorrow's session, please set your mat near the wall because tomorrow we are going to practice wall yoga. Yes. And you can also send your videos to Kamal sir. He has given us an activity for Sunday regarding the wall yoga. Send your videos in the accountability group. And Palakji, you too. Yeah, I Palakji, your will. video spend. Yes, sir, I'll do now after the session. He is not giving any prizes here first. When नरसिम्हा जी आप चुप रहिए, आपकी भी वीडियो नहीं आई है। मैं पहले वीडियो प्राइज नहीं दिया ना, क्यों क्या फायदा है वो भी वीडियो सेंड किया था। हाँ एक्चुअली अभी देखना पड़ेगा क्या करना है। Okay. That's why I was judging. Narasimha ji was judging everyone's videos. So है ना? yeah. So please बड़ा अच्छा remember. बहुत कमला सबसे सर वो एक बार सर भेज दो नरसिम्हा जी को। Yeah. So let's continue with our sharing circle. And Palak, excuse me. I want to congratulate Mahesh Patne sir for his anniversary. I unfortunately can't join IST. So heartily congratulations Mahesh sir and Poonam ma'am. Thank you so much. नविता जी आपकी कैंडल कहाँ है? नविता कहाँ है? अरे यार यहाँ अभी कुछ नहीं है, बस अरेंज करूंगी। स्पॉटलाइट पे डालो महेश जी को। महेश पूनम सर जी भी है क्या? यस वी आर बोथ देयर। महेश सर बोलेंगे कल से मेरे एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है। वो अच्छा है ना, अभी आया 2 दिन में इधर उधर घूम के सिर्फ मंडे तक। नहीं, आज आर्ट एक्टिविटी नहीं हो पाएगा। अगर टाइम मिला तो लेट्स सी। इट्स एक्चुअली 4 बजने वाले हैं, सो लेट्स सी कितना देर सेशन चलता है। Monali can share it with us on the accountability group. Silent person in our group. We can वो share it. माउथ ओपन नहीं करता है, वो साइलेंट एक दो बात कर सकते हैं। वो नेहा जी। ओजस आप कुछ बोल रहे थे? ओह सॉरी। तो मोनाली आप अकाउंटेबिलिटी में शेयर कर सकते हो इंस्ट्रक्शन, या हम एंड में शेयर कर सकते हो, एंड सारे आपके साथ अकाउंटेबिलिटी ग्रुप में शेयर कर सकते हो वो ड्राइंग। अकाउंटेबिलिटी ग्रुप पे पिक्चर्स डाल दूंगी, और जो भी करना चाहते हैं तो वो भी अपना ड्रॉ करके पिक्चर्स डाल दीजिए। बहुत इजी है, बट ये मतलब माइंड को शांत करने के लिए एक्टिविटी है, तो सब लोग जरूर ट्राई करिए। ओके, मैं पिक्चर्स सेंड करती हूँ अकाउंटेबिलिटी ग्रुप पे। ओके, एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगी फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट प्रैक्टिसिंग साइलेंस। आप ऐसे एक्टिविटीज के थ्रू फर्स्ट ट्राई टू गेन दैट साइलेंस इनसाइड यू। ड्राइंग से बहुत वो प्रेजेंस फील होता है। साइलेंस इज व्हाट? साइलेंस इज द कनेक्शन दैट यू फील विथ योरसेल्फ, जहाँ पे अंदर वो नॉइज नहीं रह जाता, वो डिस्कनेक्ट नहीं रह जाता, वो कंपोजर रहता है, वो अबिलिटी रहती है टू सी योरसेल्फ। दैट साइलेंस इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि सबको रिट्रीट सेंटर जाना ही है, मौन व्रत पूरे पूरे दिन रखना ही है। आई कैन इवन अंडरस्टैंड नाउ दैट आई एम, मैं जब देखती हूँ लोगों को, स्पेशली विमेन को जो घर संभालती है, दैट पूरा मौन व्रत करना इज ऑल्सो अ लग्जरी दैट नॉट मेनी पीपल कैन प्रैक्टिस, क्योंकि उनको अटेंड करना ही पड़ता है लोगों को। तो फिर इन दैट केस गेनिंग द इनर साइलेंस थ्रू एक्टिविटीज इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। आप लोग आर्ट वर्क कर सकते हैं,
You can go out for a walk for some time, just for some time. You can sit with yourself just for 5-10 minutes. अगर बहुत ज्यादा माइंड में बातें चलती रहती है और कुछ साइलेंस अनुभव ही नहीं होता, then you can practice chants also. Chants से भी बहुत ज्यादा presence महसूस होता है. And if nothing else, फिर भी बातें चली रही है अंदर बाहर हर जगह कोई साइलेंस नहीं है, you can use the technique of journaling, where you write down whatever you're feeling. Just clean the energies. जैसे वर्णिका ने बोला, and I also said that हमारे अंदर चीजें भरी हुई होती है, उसको हम जब निकाल देते हैं, then you actually experience that. So using all these techniques, when you release it, तब layer by layer you're able to experience it. And वो करते करते there'll be a time when you're actually able to be in silence. तब मौन में आप रह सकते हो, that becomes possible. But it is also a process. ये immediately नहीं होता है, time लग जाता है उस level में पहुंचने के लिए कई बार. Okay, so if you're not able to practice it, don't think too much about it. Don't take any tension कि सब लोग silent fasting करते हैं, मैं तो नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, या मैंने तो कभी नहीं किया, मैं कैसे विपासना करने के लिए जाऊं 10 दिन बच्चों को छोड़ के. So you don't have to go to that level. Just practice it on your own. Find out your own techniques to get that inner peace and silence and connection with yourself. And layer by layer, करते 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 आप एक level पे पहुंच जाओगे where it becomes very easy and natural. And also एक चीज है, it is a lifelong process. करते ही जाना है, करते ही जाना है, करते 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 we become better at it. Yeah. Monali bol rahi hai, sports भी, any activity, as I said, start with activities, any activity जिससे आपको वो महसूस हो अपने अंदर, and then you can see other changes happening, use other techniques, you're able to be at more presence with yourself. Presence is the word actually, presence with yourself. Yeah, and who would like to share more? Alisha, क्या बोलना चाहते हैं? She's a part of our social media team. They have been writing posts for our Instagram page on silence and habits. आप कुछ बोलना चाहेंगे? Sure. Thank you opportunity के लिए. मैं बहुत ज़्यादा साइलेंस फास्ट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं अगर ओवर थिंकिंग होता है या स्ट्रेस होता है तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ बाहर, तो वो चीज़ मुझे खुद ही सफ़र करना पड़ता है उस चीज़ से. तो उस चीज़ से विड्रॉ करने के लिए मैं 2-3 घंटे के लिए क्या करती हूँ कि थोड़ा साइड हो जाती हूँ, कहीं छत पे कभी चली गई या फिर कहीं 2-3 घंटे. और जब ओवर थिंकिंग होते हैं तब की ये बात है, और मैं धीरे धीरे बस मैं एक जगह बैठ जाती हूँ, और उतने में ही मैं देखती हूँ कि मैं कुछ ऑब्जर्व नहीं करना है, बहुत सारा कुछ करना नहीं है, बस साइलेंट रह के मैं बैठती हूँ और अपने थॉट्स को देख रही होती हूँ कि क्या चल रहा है. और मैं देखती हूँ ना कि जो चीजें ओवर थिंकिंग हो रही होती है, अपने आप उसका जो ये नजरिया होता है चीजों को देखने का, जैसे ओवर थिंकिंग में क्या होता है, कंप्लेन्स होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे डाउन होना शुरू होती है, और वो 1-2 घंटे ही मेरा पूरा पर्सपेक्टिव उस कंप्लेन को लेके या स्ट्रेस को लेके चेंज होना शुरू हो जाता है. और ज्यादातर मैं ये करती हूँ, अगर मतलब स्ट्रेस नहीं भी हो रहा है तो शाम में खाना खाने के बाद में 1 घंटे फोन साइड करके एटलीस्ट 1 घंटा मैं खुद के साथ, अभी फिलहाल जिस मैंने मंडे से शुरू किया है जो साइलेंस फास्ट का वीक था, उसके बाद से तो मैं 1 घंटा कंप्लीटली एकदम मौन हो जाती हूँ अकेले में, और उसके बाद फिर मतलब रात में काफी अच्छी नींद आती है, और चीजें मतलब सोने से पहले सब कुछ क्लियर हो जाता है. तो मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं ट्राई किया, लेकिन मैं छोटा सा फास्ट करती हूँ. Thank you. Very nice. Very nice. Thank you, Alisha. Yes, this is a very good thing that you have shared, Alisha. सोने से पहले अगर you do any technique, anything, if you practice a little bit of silence with yourself, नींद बहुत अच्छी आती है. That's for sure. Yoga Priya ji, you wanted to share. Please share. Yeah, actually, I'm following this silence past months, few months. Initially, it was like I will not speak a lot, but
it will be like louder all the time. Like Oja said, it's everyone will watch TV, speak louder, fighting. It's very common in our places. So I thought when environment is in a peace, only we can get that silence. I thought in that way, and I will get frustrated also. Why they are like that? But slowly I got realized, and initially couldn't able to practice silence. So I started with gratitude. I'm very much attached to that. I can feel gratitude in every small things. So every time I'll start with gratitude, so that it slowly leads me to that silence. Now I can feel the silence whatever I do, wherever I'm, whatever it's going. So initially was used to go for retreats and everything, but wherever we go, um, mind is not calm. So I felt that I learned that it should come in inner silence is the complete solution, and now I'm working on it. And so my best practice is gratitude, and like Monali, the all other work activities which 5 a.m. doing, it's everything helps me to focus on the silence. And thank you for this very good topic today. Thank you for everyone who shared. Thank you, Yoga Priya ji. Thank you. And who else? Kamal ji. Yes. हमेशा ये होता है शेयरिंग सर्कल के एंड में एवरीबॉडी ओपन्स अप दे स्टार्ट टू ओपन अप नहीं एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि मतलब बाकी सबको टाइम मिल जाएगा, टाइम बचेगा देन आई विल स्पीक, तो दैट्स व्हाई आई वाज वेटिंग जस्ट. नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द अदर्स. अभी देखिए बहुत हैंड रेज हो गए. योगिनी जी. चलिए कमल जी. Yes. मतलब इस बात पे एक छोटी सी बात याद आती है. कई बार हम किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, वो आपसे जल्दी मिलते नहीं, लेकिन जैसे आप जाने लगते हो ना, दे स्टार्ट बाय बाय. सो इट फील्स लाइक कि अभी जा रहे हैं तो मुझे भी बोलना है. रो भी देते हैं कभी कभी तो. ओके. तो काफी लोगों ने काफी चीजें शेयर की और काफी अच्छी अच्छी चीजें शेयर की. बीइंग अ योगा टीचर, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज कंप्लेन करते हैं कि सर जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, साइलेंट में बैठते हैं, तो उस टाइम ना थॉट्स का फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है. मतलब हम नॉर्मल बात करें तब शायद इतना थॉट्स नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है दिस इज वेरी कॉमन विद एवरीवन कि व्हेन यू सिट इन साइलेंस एंड उस टाइम आपका जो फ्लो ऑफ थॉट्स है वो इंक्रीज हो जाता है. अब उस टाइम क्या होता है ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द साइलेंस, सो अकॉर्डिंग टू मी साइलेंस, अगर हम मौन व्रत भी कर रहे हैं लेकिन अंदर हमारे वो चीज हलचल मची हुई है, तो उसका फायदा नहीं है चाहे आप 1 घंटा बैठ लो, आप कोई भी टेक्निक फॉलो करो, लेकिन जब तक वो अंदर से शांत नहीं है उस साइलेंस का फायदा नहीं है. लाइक अगर मैं पूरा दिन कहूँ चलो जी आज मैं पूरा दिन बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे मन के अंदर थॉट्स चले जा रहे हैं और वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं. So though you are practicing silence by not speaking, but at the same time you are not actually silent. So the real silence comes when you are silent from inside, like nothing is bothering you. मतलब जो बाहर चल रहा है और जो अंदर चल रहा है दोनों तरफ से you are silent. तो उसके लिए ना मतलब being like in yoga there are steps. ठीक है. अब हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो बहुत स्टेप्स हैं उस चीज तक पहुंचने के लिए. एंड वी टॉक अबाउट द साइलेंस, तो साइलेंस उस अष्टांग योग के अंदर किस स्टेज पर आता है, मतलब व्हाट आई फील दैट्स कॉल्ड द संयम. हमारा धारणा, ध्यान एंड समाधि जो हमारे अष्टांग योग के लास्ट 3 पार्ट है उनको मिलाकर एक टर्म बनता है, दैट्स कॉल्ड द संयम. लेकिन उससे पहले के जो पार्ट है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, वहां तक की जर्नी हम करना ही नहीं चाहते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रत्याहार वर्ड यूज करूँ तो आप में से शायद बहुत कम लोग को पता होगा व्हाट इज प्रत्याहार एक्चुअली. मतलब जो योगा प्रैक्टिशनर है दे अंडरस्टैंड, जिन्होंने अपना राधिका जी का 21 डेज योगा चैलेंज ज्वाइन किया होगा, दे अंडरस्टैंड कि प्रत्याहार क्या है. लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता कि प्रत्याहार होता क्या. प्रत्याहार है लाइक हमारी जो सेंसेस होती है ना, दीज आर द मेन कल्प्रिट्स, वो हमें भगाती रहती हैं.
और हमारा मन है वो उसी वजह से डिस्ट्रैक्ट होता है। जब हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज सेंसेस गोज आउट, उनको बाहर चीजें मिल रही है, लाइक आई वांट टू लुक आउटसाइड, दैट्स द ब्यूटी, आई वांट टू लिसन आउटसाइड, आई वांट टू फील द टच ऑफ आउटसाइड। तो जब वो हमारी सेंसेस बाहर जा रही हैं, इनफैक्ट यू आर मेडिटेटिंग बट यू आर लिसनिंग सम म्यूजिक, चाहे वो नेचुरल म्यूजिक है, बर्ड्स अपना, देयर आर बर्ड्स चर्पिंग, क्लाउड्स आर थंडरिंग, रिवर इज फ्लोइंग, लेकिन स्टिल यू आर गिविंग फूड टू योर सेंसेस, है ना। अब आपकी सेंसेस बाहर का वो वर्ड सुन के यू आर फीलिंग आहा, ना आई एम साइलेंस, मेरे को मजा आ गया अभी, मतलब मजा आ गया मेडिटेशन करके, आई वाज फीलिंग वेरी साइलेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। लेकिन ये सोचो कि वो जो आपका सेंसेस का फूड था वो उसको मिल रहा था, एंड दैट इज जस्ट द सेटिस्फेक्शन ऑफ दैट सेंस, दैट इज नॉट द साइलेंस। तो जब हमारी सेंसेस हम अंतर्मुखी करते हैं, जब उसको इनसाइड करते हैं, बिकॉज यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो चीज उस यूनिवर्स में है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस बॉडी, वी जस्ट नीड टू फिगर आउट। हम अंदर नहीं जाना चाहते, क्योंकि जैसे हम अंदर जाते हैं, जैसे आपने बोला कि बहुत सारा एंजाइटी होने लग जाती है, रेस्टलेसनेस होने लग जाती है, हमें लगता है कि यार हम कितना जैसे कचरा भरा पड़ा है, जैसे आपने एक टर्म यूज किया था। तो बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। when we start accepting कि चलो ठीक है, this is happening to me and let's observe, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, and when we start accepting the outer things, तो हम अंतर्मुखी बनते जाते हैं, and when you start listening your inner voice, when you start tasting what's going inside, when you look inside, तो शायद आपको बाहर की चीजें कभी डिस्टर्ब करेंगी नहीं, and that is a true silence, क्योंकि what's going outside you may not control, but what's going inside you can always control। तो हमारा चाहे वो थॉट प्रोसेस है, चाहे हमारा वो सेंसेस के ऊपर कंट्रोल है, और मैं कहूंगा अगर किसी को भी साइलेंस प्रैक्टिस करनी है, मतलब दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, प्रैक्टिस प्राणायाम फर्स्ट, बिकॉज व्हेन यू कैन कंट्रोल ऑन योर ब्रेथ ना, क्योंकि ब्रीदिंग इज द ब्रिज बिटवीन आवर बॉडी एंड द माइंड। और अगर हम फिजिकल लेवल पर हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, लाइक मुझे पेन है, मेरी बैक में पेन है, या मेरा हैमस्ट्रिंग टाइट है, या मेरे को सर्वाइकल प्रॉब्लम है, इवन आई एम सिटिंग इन साइलेंस, बट वो पेन, फिजिकल पेन मेरे को फोकस नहीं करने देगा कभी भी। एंड एट द सेम टाइम जब हमारे माइंड के अंदर इतना सारा क्लटरिंग हो रखी है थॉट्स को लेकर, तो वहां पर भी हम फोकस नहीं कर सकते। तो हम कहाँ फोकस कर सकते हैं? सेंटर पॉइंट विच इज द ब्रिज बिटवीन बोथ, दैट इज द ब्रीदिंग पार्ट। ब्रीदिंग इज नॉट द प्राणायाम, breathing is just a tool to the pranayam. What actually pranayam is, to feel that connection with your inner self. So जब हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे वी फील दैट वी आर मोर कनेक्टेड टू आवरसेल्फ। तो फिजिकल लेवल पर हम आसनों से अपनी बॉडी को स्टेबल करते हैं, और प्राणायाम से अपनी ब्रीदिंग को हम कंट्रोल करते हैं, अपनी ब्रीदिंग को चैनलाइज करते हैं। तो धीरे धीरे यू विल ऑब्जर्व कि व्हेन योर बॉडी इज स्टेबल, योर ब्रीदिंग इज स्टेबल, ऑटोमेटिकली द माइंड कम्स अंडर योर कंट्रोल, एंड दैट इज द वे यू कैन अचीव दैट साइलेंट स्टेज। वो बाहर से आप कुछ भी एक्टिविटीज भी करें, जर्नलिंग करें, दो दे आर गुड, मतलब यू शुड प्रैक्टिस एवरीथिंग, बट अगर हम उसके क्रक्स, लाइक उसके बेस पे काम नहीं करेंगे ना, उस पे जड़ पे काम नहीं करेंगे, तो वो थोड़े टाइम बाद फिर आ जाएगा। जैसे बहुत सारे मैंने लोगों के एग्जांपल सुना है, हम विपासना करके आए थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, इसलिए हम वापस उसी स्टेज पर आ गए। तो साइकिल तो चलता रहेगा, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट बेस। और जब हम वहां पर काम करने लग जाएंगे ना, तो चाहे मैं हूँ, लाइक आई एम वेरी टॉकेटिव इन नेचर, क्योंकि मेरा वायु दोष बढ़ा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी मेरा वायु एलिमेंट बढ़ा हुआ है, मेरा एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ है। सबका 5 एलिमेंट से बॉडी बनी होती है, किसी का कुछ एलिमेंट ज्यादा होता है, किसी का कुछ, उसी के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर, आपका नेचर बनता है। सो अगर किसी का एयर एलिमेंट ज्यादा है, वो हमेशा टॉकेटिव ही मिलेगा आपको। किसी का स्पेस एलिमेंट नहीं या दिस इज नेचर, यू कांट चेंज द नेचर, है ना। अगर सूरज उग रहा जो कम बोलता है, जो कम बोलता है उसके लिए क्या है? स्पेस एलिमेंट ज्यादा है उसका। और अगर आपका एयर एलिमेंट है एंड यू आर बाय नेचर वेरी टॉकेटिव, सो यू शुड प्रैक्टिस प्राणायाम। सो प्राणायाम विल हेल्प यू टू हैव कंट्रोल ऑन योर ब्रेथ, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली कमल सर, you will understand balance. So yeah, thank Okay, you. so you are talking about breathing. Yes. Yes. Breath main है. Breath पे जब control सही, Yes. तो सब सही. Yes. Agree. Totally agree. Yes. Definitely. Thank you, Kamal ji. Thank you for sharing the most basic thing जो हम भूल ही जाते हैं actually. ये ब्रह्म कुमारीज में बहुत ये वो लोग बहुत
ये बात बोलते हैं दैट दिन के पूरे दिन में आप अलार्म लगा लिया कीजिए आफ्टर एवरी 1 hour फॉर 1 minute साइलेंस, फॉर 1 minute साइलेंस. उसमें आप you come back to your breath, and when you are back to your breath, then everything is fine, then you are in silence, then you are with yourself. तो कोई chaos And भी हो तो वो भी छटाक से आप डील कर सकते हो उस टाइम में. So thank you very much for reminding about that. मैं कभी विपासना नहीं गया हूँ, बट आई हैव हर्ड कि वहां पे भी लाइक दे मेजरली डू मेडिटेशन एंड दे मेक यू फील कि आनापाना करना है, लाइक यू नीड टू फोकस ऑन द ब्रेथ. सो आप कहीं पर भी किसी भी लाइक बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, जैनिज्म को फॉलो करते हैं, किसी भी योगिक फिलोसफी को फॉलो करते हैं, तो ब्रीदिंग इज वेरी कॉमन इन ऑल दोज फिलोसफीज. तो मतलब मैंने तो अभी तक Yes. अपना एक्सपीरियंस है जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है, आई ऑलवेज फोकस ऑन दिस थिंग कि अगर आपका ब्रीदिंग पे कंट्रोल है, देन यू कैन कंट्रोल ऑल द थिंग्स व्हिच गोइंग आउटसाइड इनसाइड, हर जगह से. Yes, that control is necessary, and Vipassana tells not to control actually. They say control नहीं करना है, watch करते रहना है. ऑब्जर्व. Yes. So then that becomes all the more problematic because you know the techniques. मुझे पता है कि मैं ये टेक्निक करूंगी, थोड़ा सा ब्रीदिंग में मेरा कंट्रोल आ जाएगा, I'll be fine. But then when they say कि नहीं, कोई टेक्निक नहीं यूज करना है, देखते रहना है बस, अपने आप जब ठीक होता है तब ठीक होता है, then that becomes the challenge. So yeah. थैंक यू कमल जी, थैंक यू वेरी मच. आपके साथ इस बारे में एक प्रॉपर सेशन होना चाहिए मुझे लगता है, तो करेंगे हम इस बारे में और बातें. और मूविंग अहेड, हु वुड लाइक टू गो नेक्स्ट? सो मेनी हैंड्स वर रेज्ड. योगिनी जी. Yeah, thank you. This is a very nice session. I'm enjoying the sharing of everyone. Like Kamal's sir said, we need to control our senses. Sense control ही जो है जब होता है तभी हम silence में we can arrive at that stage of silence. And silence is here and now. Being in the timelessness in the here and now. You cannot wait for silence to happen. That is my personal. And when whatever you do, if you do it in silence, observing your breath and doing it joyfully, then your mind will not be agitated. Then life will be very smooth. You are going with the flow of the universe, and you are calm within. So that's what silence means to me. And because when you try to sit in silence, your mind will always be cluttered with so many multiple thoughts which you never even imagined. So these multiple thoughts can be replaced only with some other alternative, a better taste. You develop a better taste to replace those thoughts. That's how your mind will be under your means you are able to empty your mind and replace it with better thoughts. And for me personally, chanting has helped me a lot. Just a second. When you're in silence, you're connecting not only to yourself but also to the higher supreme power within you. And when you connect to connect with the supreme power within you, need to have some kind of a method. So मुझे personally, क्योंकि मैंने विपश्यना भी किया था, I did Buddhism chanting भी किया, but I couldn't find my answers when I did this various types of meditation retreats I've attended, but I couldn't find what I was looking out for. But this Harik Mahamantra chanting से मुझे जो answers मिलने थे, what I was searching, my quest stopped when I started chanting this Mahamantra more consistently. From earlier also we used to chant regularly, but अभी जो है ज़्यादा focus देके हम chant करते, attentively chant करते, तो सारे जो along with reading of scriptures, understanding the what our being should be, what is our higher purpose in life, it helps a lot. For me personally, it has helped a lot. That's what I wanted to share. And we need to find a counselor if we feel that our mind is not getting stabilized over a period of time, despite doing various methods of chanting. Some spiritual counselor or guide will definitely be able to help us in this matter. That's what personally also I sought the help of a spiritual counselor who put things in perspective for me, especially when things are going very haywire in my personal life. So that's it. Thank you so much. Beautiful. Thank you so much, Yogini ji. Thank you for sharing. Yes, definitely. What you talked about is basically presence.
To be in presence and to be in that awareness is everything that we need. और तब चीजें आराम से आपके हिसाब से होती भी जाती है, चीजें इमीडिएटली मैनिफेस्ट भी हो जाती है. And for everybody who wants help and support in it, please do seek help and support. There's nothing like having a support system in your journey. So next, who would like to go? Bhavna, Palak said. Yeah. हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. मैं मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. समथिंग 1.5 years पहले मेरे अंदर भी वो चीज़ आई कि यार मुझे नहीं करनी किसी से भी बात, सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि दिमाग उसी में लगा रहता था, शांति नहीं होता था. तो बस ये आ गया माइंड में कि ये सोशलाइज होना, ये सब होना, सब ऐसे ही है, सब छोड़ दो. जब छोड़ दोगे तो अपने आप दिमाग शांत हो जाएगा. कि हम जितना ज्यादा बात करते हैं उतनी टेंशन सी बढ़ती है, इसलिए सब कुछ छोड़ दो. इस चक्कर में जैसे अभी किसी ने आपने शायद तन्वी जी आप ही ने बोला था कि आपने व्हाट्सएप वगैरह सब अनइंस्टॉल कर दिया. यही मैंने किया. मैंने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया, इंस्टा अनइंस्टॉल कर दिया, एकदम बिल्कुल मतलब जितने भी सोशल मीडिया थे सब कुछ छोड़ दिए कि हाँ अब तो मेरा दिमाग शांत हो ही जाएगा. कुछ 5-10 days 15 days 20 days गए, बट कुछ फर्क नहीं पड़ा उस चीज से कि दिमाग तो वैसे ही चल रहा है. हम किसी से बात नहीं कर रहे तो हम खुद से बात किए जा रहे हैं, और वो बात भी ऐसी कि रोक ही नहीं पा रहे हम उसको, बिल्कुल भी हम साइलेंट नहीं रह पा रहे. देन आई रियलाइज कि ये तो शायद सही तरीका नहीं है, क्योंकि जब तक दिमाग शांत नहीं है तब तक आप सब कुछ कितना भी अनइंस्टॉल कर दो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना. देन आई ट्राइड नाइट वॉक, क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन तो अब बन रही हूँ धीरे धीरे, वैसे मैं नाइट पर्सन हूँ. तो मुझे रात का जो जैसे चांद तारे जब दिखते हैं ना, अंधेरा है, एकदम हल्की हल्की लाइट है और ऊपर स्टार्स है, मून है, वो चीज मुझे ज्यादा फैसिनेट करती है. वहां पे मुझे ज्यादा साइलेंस मिलती है. तो मैंने नाइट वॉक ट्राई किया, और वो सच में बहुत मेस्मराइजिंग होता है कि अब मेरे को आज 1 साल हो गया, मैं डेली रात को 1 घंटा उस नाइट वॉक को देती हूँ, जिसमें मैं सब कुछ जो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है, मैं अपने आप में वॉक कर रही हूँ, अपने आप से बात कर रही हूँ, चांद तारों से बातें किए जा रही हूँ. कोई पागल कह रहा है तो कह रहा है, लेकिन मुझे वो चीज बहुत अच्छी लग रही है कि हाँ मैं मेरी मन की सारी बातें उनको कह दे रही हूँ, और वो मुझे बहुत रिलैक्स फील करवा रहा है. अभी एक चैट में भी डिम्पल जी ने बोला कि हम सोशल एनिमल्स हैं, हमें सोशलाइज करने की जरूरत है. और एक चीज उन्होंने और बोली थी, वेट लेट मी सी दैट. हाँ, कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर है. तो डिम्पल जी मैं ये कहना चाहूंगी कि उस शैतान से ही हमको बात करनी जरूरी है. जब तक उस शैतान को हम अपना दोस्त नहीं बनाएंगे ना, तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा. उस शैतान से ही बात करनी है, उस शैतान को ही अपना फ्रेंड बनाना है, और जैसे ही हमने उस शैतान को अपना दोस्त बना लिया ना, सब कुछ ऑटोमेटिकली फाइन हो जाएगा. थैंक यू. तो भावना जी, वो फ्रेंडशिप हमको भी चाहिए यार, थोड़ा इंट्रोड्यूस करें यार. क्या बोले नरसिम्हा, सॉरी क्या बोला आपने? नहीं, वो शैतान से फ्रेंडशिप होना चाहिए. प्लीज इंट्रोड्यूस सम टाइम, और ऐसा नहीं है. जी सर. थैंक यू सो मच भावना फॉर शेयरिंग. आपने बिल्कुल सही बोला, जितना भी बाहर से कुछ भी डिलीट कर दो, अंदर से जो अंदर की बात वो अंदर में ही सॉल्व करनी पड़ेगी, वो कनेक्शन खुद ही बनाना पड़ेगा, उस चैटर बॉक्स से दोस्ती करनी पड़ेगी. वन ऑफ माय मेंटर्स ऑल्सो says that हम जो मैंने अभी कचरा भी, the word कचरा I used, there are a lot of things that we don't want, that are unwanted. She says that वो भी actually हमारा ही हिस्सा है. So when you accept that, embrace them, उसके बाद जब आप उनसे दोस्ती कर लेते हो, then everything works according to your favor, and there is a deeper level of acceptance, and उससे भी वो awareness and presence develop होती है. All right, who else would like to go? I just take the names of everybody, okay? So जिनको भी मन है वो बोल सकते हैं. Dr. Priya, Marley, Dimple ji, Sangeeta, Neha, Kanchan, Sonal, Varun, Khushbu, Poonam ji, Prerna, Priyanka, Palak. Actually, Palak ji wants to share something. I don't have anything, Narasimha sir. बोल सकते हैं. You're like the backbencher friend who
pulls the friend up in class. इसको बोलना है, इसको बोलना है. No, actually, I really don't practice silence. I have not done that. There is everything in my brain going on. So I try to meditate and I try to chant nowadays. But you know that I am a talkative person, and in my workspace also I have to speak a lot. So yeah, I'll try. And from meditation only, as Kamal sir said, no, प्राणायाम से, breathing exercise से आप वहां तक पहुंच सकते हो. It was quite relatable for me. So yeah, Navita ji wants to say something, I think. Hi, good afternoon, Yes, everyone. Navita ji. How are you, Tanvee? Hello, Navita ji. How are you? So good to hear you. We want to see you also. क्या दूसरों को दिख रहे हैं वो? नहीं ना? Okay. We want to see you. We want to see Hungary. हमको भी देखना है. यार Please बोलिए. एक्चुअली अभी जो सेशन चल रहा था तो उसमें मैं सबको सुन रही थी बिकॉज मुझे इतना आइडिया नहीं है कि हाउ द थिंग्स गोज ऑन. बट मुझे इतना पता है कि साइलेंस एक बहुत बड़ा टूल है और साइलेंस में हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं जिससे हम खुद को जान पाते हैं. तो सिर्फ मुझे इतना ही बोलना है कि इस चीज़ को करने के बहुत अलग-अलग तरीके हैं. किसी को चैंटिंग से वो साइलेंस मिलता है, किसी को साइलेंट मोड में जाने से वो साइलेंस मिलता है, किसी को प्राणायाम करने से वो साइलेंस मिलता है. तो इस चीज़ के एक ही तरीके नहीं हैं, इस चीज़ के अलग-अलग तरीके हैं. जैसे मुझे ये 3 चीज़ें पता हैं. तो साइलेंस में जाना, साइलेंस में बैठना बहुत अच्छी चीज़ है, इसे करना चाहिए. इससे हमारे बहुत से थॉट प्रोसेस ओपन होते हैं और गोइंग टू विपासना और सिटिंग इन साइलेंस इज़ नॉट वन द टूल बट चैंटिंग से भी फ़ायदा होता है. जैसे पर्सनली मुझे प्राणायाम से फ़ायदा होता है. मेरे लिए प्राणायाम ही पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ है जिसमें मैं साइलेंस में चली जाती हूँ. मेडिटेशन जब करती हूँ तो माइंड बहुत चैट करने लगता है. तो प्राणायाम मुझे बहुत सूट करता है और सेकंड नंबर पे जिससे मुझे फ़ायदा होता है वो चैंटिंग है. बस मुझे यही शेयर करना है कि ये 2 तरीके से मुझे साइलेंस में आई कैन कनेक्ट माई सेल्फ बाय दीज़ टू थिंग्स. नविता जी, आप हंगेरी में हमेशा Yes. साइलेंट में रहते Thank you very much, Navita ji, for sharing. या अभी तो हूँ So साइलेंस yes, में. as Navita ji said कि सबके तो सबके अलग अलग तरीके हैं इसको करने का. चैंटिंग प्राणायाम से भी you can achieve that state of silence. I can say it for my mother. She does chanting or I have seen people जिनको पूजा worship से वो silence मिलते हैं. They chant, they talk to the divine energy. उससे भी काफी peace and awareness presence develop होता है where you get that sense of silence inside you. So we are talking about the power of silence and it is 4:19 p.m. I want to know who else would like to share. Hi, ma'am. Sangeeta, Neha, Realme, XT, AJ, Kanchan, Poonamji, Varun. नवीन Anybody? नवीन Molly? सर बोलना चाहेंगे. नवीन सर. तन्वी दी, छोटा सा क्वेश्चन था मेरा. हाँ मैम. Yes. Hi, ma'am. एक्चुअली आई वांट टू नो कि साइलेंस और Is it Naveen सुकून who's No, ma'am. This Bhavita. Question. भावना चाह रही थी कि साइलेंस और सुकून ये दोनों एक ही चीज है या ये अलग अलग है. सुकून मतलब क्या है? Peace. सुकून मतलब peace. Silence मतलब शांति. Sukun is an emotion that you feel. No, you're feeling something. Silence is nothingness. It's nothingness. When you are in silence, you're definitely in peace. Silence is nothingness.
it's a different form of emptiness that you are in, and definitely you feel that sukoon in that peace. उसमें वो emotion महसूस होता है, you know. So yeah, Yeah, that is ma'am. what I would like This to is say. If anybody else have anything else to add to it. Yes, Naveen. yeah, ma'am. Hello, everything. सभी लोगों को Yes. गुड इवनिंग. मेरा नाम ना अभी तो मैं एक टेक्निक इस साइलेंट को एक टेक्निक में एक आइडिया आया मेरे को. सभी मेरे को सब टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गया तो वो कचरा को कैसे निकालना होता है. तो एक आइडिया में मेडिटेशन करने के बाद एक आइडिया लेता हूँ. सेपरेटली एक कचरा निकालने के लिए एक मेडिटेशन लेता हूँ. फॉर एग्जांपल एक हाफ एन आवर और कुछ मेरा अंदर से मेरा साथ में मैं बात करता हूँ. क्या किधर से आया ये इस सब चीज को लिए मैं निकालता हूँ. उसको जाके वो उसको लाऊं. फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ साथ में झगड़ा हो गया तो उसको फॉरगिवनेस देता हूँ. उसको अंदर का जाके वो फिगर को कौन मेरे को झगड़ा किया उस फिगर को मैं देख के उसी को फॉरगिवनेस दे के उसी साथ में अच्छा बॉन्डिंग उस अंदर में बॉन्डिंग करता. बाहर कुछ मालूम नहीं मेरे को. बाहर बात करता है कुछ करता है नहीं मेरे को नहीं चाहिए. मेरा अंदर कुछ रहना है. वो ऐसा करके वो बाद में एक 10 दिन मैं ऐसा कर दिया तो अगेन मैं कैसा उसको साथ में मैं वो झगड़ा होने आदमी के पास में ऐसा झगड़ा किया ना उसको मैं अंदर का जाके समाधान कर दिया तो वो लोग का ये मेरे साथ में वो दूर चल जाएगा. क्यों है तो ये प्रॉब्लम निकल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं अंदर से प्रॉब्लम निकाल दिया तो ये आया तो ये जरूर पक्का आदमी है तो मेरे साथ बात करेगा. नए है तो वो निकल जाएगा. ये टेक्निक मेरे को यूज हो गया. फॉर और एक टेक्निक मैं यूज कर रहा हूँ. बाद में मेरे को सभी गड़बड़ हो गया तो कंफ्यूजन और कुछ क्या करना है कुछ करना है. फॉर एग्जांपल किधर भी मैं जाए तो ना जा सकता है. क्या करना अभी तो बैठ के एक कंफ्यूजन चलता है. एक मेरा स्पॉट है वो थोड़ा मेरा गांव को नियर है. वो मैं उसको मेरा फीस का जगह है. उधर जागता हूँ बैठता हूँ. मैं अराउंड 2 आवर्स और 3 आवर्स में स्पेंड करता हूँ उधर. स्पेंड करके वो कंप्लीट जाने का एक हाफ एन आवर वो जाने का वो उधर जाता है ना. जाने का बाद वो सभी फीस आ जाएगा. जाने के बाद उस मन का बात आराम से करता हूँ. बैठता हूँ उसको नेचर से साथ बात करता हूँ. एक माउंटेन देखता हूँ और एक ट्री देखता हूँ एक क्लाउड देखता हूँ. उसी साथ में बात करता हूँ. कैसे है तुम क्या करता है मैं इधर क्यों आया मेरा सोल का काम क्या है मैं क्या करना है ये सभी कुछ उस साथ में बात करता हूँ. एक आंसर भी मिलेगा मेरे को. एक 1 मंथ को लिए एक मेरे को आंसर मिल जाएगा. मैं क्या करना है मैं किधर जाना है मैं कैसा मेरा गोल है मैं कैसा उसको अचीव करना है ये सभी कुछ मेरे को आ जाएगा. इसी टाइम में मैं कोविड का टाइम में मैं घर में नहीं बैठता था. मेरा वाइफ को वो सभी स्पीड का है आदमी सभी स्पीड में करेगा. वो मेन थॉट भी बहुत स्पीड है. उसको कंट्रोल का मेरा पेशेंस है. मैं पेशेंस का ब्रांड एम्बेसडर है. बहुत पेशेंस में रहता है. क्या प्रॉब्लम हो गया तो मैं बहुत टेंशन ले लेता हूँ. आराम से काम और पीस में हो जाएगा. कुछ प्रॉब्लम मेरा फ्रेंड में एक बड़ा एक बम ब्लास्ट हो गया तो ऐसा भी बैठता हूँ. क्यों है तो बम भी है ना ब्लास्ट हो गया वो मैं क्या कर सकता है. वो बम वो ब्लास्ट किया मैं बैठा है उतना ही ऐसा करता हूँ. अब मेरा मन से मैं बहुत बात करता हूँ. मेरा क्या है साइलेंट का थोड़ा ज्यादा है. साइलेंट का वो साइलेंट ना थोड़ा बाहर लेके आना है. क्यों तो साइलेंट ज्यादा हो गया तो मैं बात नहीं किसी का बात करने का चिंता करता हूँ. क्या बात करना मेरे को बात आता है अंदर ऊपर बाहर नहीं आ रहा है. अंदर है ये बात करो ऐसा बाहर नहीं आ रहा है. इसलिए ये ग्रुप मेरे को बहुत
एक ग्रुप को बहुत फैन है मैं। इस ग्रुप में जॉय मिला है, सभी मिला है मेरे को, क्या चाहिए ये सभी एक जगह में सभी मिलता है ना, ऐसा एक ग्रुप में मिल गया। इस ग्रुप में इसलिए मैं बात ज्यादा कर रहा हूँ, नरसिम्हा साथ में बात ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव वे ले रहा हूँ मैं, एज ए पीस है मेरे पास। थोड़ा मैं इम्प्रूवमेंट, थोड़ा बात करने का थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है, ये ऐसा मैं सोचा है। यही मैं बता रहा हूँ, थोड़ा छोटा का है मेरा स्टोरी। प्लीज कुछ कुछ मिस्टेक हो गया तो प्लीज। थैंक यू सो मच नवीन। सबको बता दो, शेयरिंग स्पेस जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इट्स अ वेरी लविंग ओपन नॉन जजमेंटल स्पेस। हम करते ही हैं सो दैट एवरीबडी ओपन्स अप और आप बोलिए। एंड वी वांट यू ऑल टू स्पीक, इसलिए 1 घंटे का सेशन अभी 2 घंटे का हो गया है। क्योंकि we wanted everybody to speak. So now we will have just it was एक्चुअली मैं lovely to किधर ही जा listen रहा to you. था, आप कभी भी आएगा मैं तो किधर वो ही जा 2 रहा घंटा था ये सेशन मेरे को इम्पोर्टेंट ऐसा मेरे को कॉल आया था मेरे माइंड में, ये सेशन अटेंड करना है तुम, ऐसा सोच के मैं वो उसको मीटिंग को कैंसिल करके इधर एक जगह में नेचर भी अभी तो नेचर का एक साइड में लगा के रोड साइड से वो आराम से ये ऐसा पीस का ये बात कर रहे हैं। साइलेंट का फॉर एग्जाम्पल। Very nice. Thank you so much, नवीन। जो बातें आपने बोली, it's very important. आप अंदर से अपने आप को खाली कर देते हैं, right? So that you're able to Yeah, ma'am. operate in your best. So yes, अपने आप को अंदर से खाली करना बहुत जरूरी है. That's when you experience the nothingness, the silence inside, and that is when you can experience the peace. And that affects the quality of your life. आपका patience, आपका relationship with yourself, relationship with everybody around you, everything really blooms when you're able to experience it. Okay, thank you very much. We will have one last person to speak. Dimple, she wanted to speak, I think. Would you like to go ahead? And I think we have with us Amit, if I'm not wrong. Is Amit here with us? Yes, Tanvee ma'am, how are you? Yes, Amit. Oh, this is so beautiful. It's so lovely to see you. Yeah, I was Amit there. is surprised. See Amit, how Amit, everybody is happy, please. Amit. I'm keeping silent. अरे नहीं अमित, ऐसा मत करो, एटलीस्ट वीडियो ऑन करो यार प्लीज। Yeah, Yes. give me 2 seconds. तो- I'll continue तो with your सबको talks. बता- I'll be there. सबको बताना चाहूंगी, अमित is the one of the few members जो हमारे साथ बिगिनिंग से 5am मूवमेंट में रहे हैं. He has been in our core team and now he has been busy in developing his own business in Indore. तो अभी वो इतना नहीं आ पा रहे हैं, but we miss him and we want him with us. आप प्लीज आइए अमित, and it is so good to see you. Yeah, definitely. वाओ, हाँ क्या? आज तन्वी और अमित बिछड़े कोर मेंबर्स वापस आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई वांट टू टेल मैं एवरीवन एक चीज बता रहा हूँ। हेलो मैम, इस टीम कैसा वो ऑर्गेनाइज, ये टीम कैसा बनाया, ऐसे एक रोज में एक सेशन रख लो मैम। ये टीम कैसा आया, इस लोग कैसा आया, फॉर एग्जांपल ऐसा एक मेरे को अच्छा। सभी लोग को थोड़ा थोड़ा मालूम है, सभी लोग को मालूम नहीं अच्छा, कैसा है इसको फॉर्म किया, क्या है इसका टीम का गोल क्या है, कैसे ऐसा बताइए आया? तो मैं कुछ लोग को काम करने के लिए मेरे को थोड़ा फ्री हो, फॉर एग्जांपल आइडिया आ जाएगा। जर्नी ऑफ 5 AM मोमेंट। वाओ, अच्छा, we will do that, and me and Ojas, we always say it is God's grace. अपने आप एक थॉट आया था और ये हमने ओपन कर दिया था, अपने आप लोग आते गए, लोग जुड़ते गए, and now we are here. So definitely हम जरूर इस बारे में बात करेंगे. Thank you नवीन. And hi अमित, कैसे हो आप?
अमित कैसे हो आप? I was keeping silent from long time. How are you guys? कैसे हो सब लोग? Good to see you, all new faces. Good to see old faces. good to see. Thank you, आप ma'am. बताइए Thank you. आपका साइलेंस का जर्नी कैसा रहा है? आप बताइए अब हमें. I locked on early, तो जब से अभी तक silent ही था. So it's all good. Listening to everyone about their techniques, about their experience, about their journey of silence. So good to know. I cannot keep myself silent, but practice कर रहा हूँ from last many days through some Kriya yoga or something I've learned. So it is helping me out. थोड़ा सा calmness आया है attitude में, थोड़ा सा बोलने का कम आया है. Like I keep myself silent these days. So बहुत सारी practice कर रहा हूँ. Almost completed 40 days of that kriya. So hopefully it will keep me practicing those kriya. Breathing है उसमें, yoga है. So all good. Good to know कि आप लोग अभी भी कर रहे हैं सब चीजें. Started this afternoon session with you guys. After 6 months, I have again joined you for today's session. मेरे को भी लगा कि this is very important. आई एम इंटरप्टिंग यू ma'am. अमित, और अभी सिर्फ 18 पार्टिसिपेंट्स ही है, बट मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ओजस हैज स्टार्टेड द मूवमेंट, बट अमित वाज द सोल ऑफ दिस मूवमेंट. वो बैकबोन था, वो सोल था, वो फायर था. अमित ही है जिसने इस 5M को स्ट्रक्चर दिया. अमित के कंट्रीब्यूशन इतने हैं कि मैं बता नहीं सकती. अमित ने ही ये फॉर्म किया ग्रुप, अकाउंटेबिलिटी ग्रुप अमित ने फॉर्म किया. सुबह 4:45 पे सब लोग वेकअप सेट करके डालते थे, वो अमित ने स्टार्ट किया. डांसिंग में अलग अलग वेरिएशंस लाना अमित ने स्टार्ट किया. सबको कनेक्ट रखना, मेंबर्स लाना अमित ने स्टार्ट किया. तो अमित ने तो इतना कुछ किया है. जो 5M आप देख रहे हो ना, वो जनवरी तक अमित ने संभाला अलोन. मतलब ओजस था, हम सब थे, बट एक जो फायर थी वो अमित था. Definitely, ma'am. Everyone supported. It's just not me. सब लोग थे, and then this journey is continued till today. Afternoon sessions are going very well. उसको भी बहुत mold करा था, बहुत engage करा था लोगों को, and it's still continuing. Good to know everyone is there. ये grow हो रही है community. Today it was 50 plus people. करना चाहूंगी अमित. नवीन जी पूछ रहे थे अभी की कोर टीम मेंबर्स कैसे एक साथ आए, तो उसके पीछे अमित का ही हाथ है. Ma'am, definitely. Thank you, sir. It is a ऐसा journey. एक group बनाया. Actually Amit was ऐसा एक group. the person जो सबसे enthusiastic थे. जैसे मैंने और ओजस ने जो भी स्टार्ट किया, अमित वाज द थर्ड पर्सन जिसका एंथुजियाज्म लेवल से पूरा ये बहुत एक्सटेंड हुआ. वी गॉट टू नो कि लोगों को इससे फर्क पड़ रहा है बिकॉज अमित इतना एंथुजियास्टिक था. नहीं तो मुझे और ओजस को इतना पता नहीं था किसी हद तक इम्पैक्ट हो रहा है लोगों को. तो यस, तो अमित मोस्ट इम्पोर्टेंटली साइलेंस तो साइलेंस है, बट सबसे जरूरी कल है गेम्स. ओके, एंड गेम्स में अमित का रोल कोई नहीं भूल सकता है. तो अमित, वी वांट टू सी यू टुमारो गेम्स में. आप आओगे कल? आपने रियली सॉरी, कल तो साइकिलिंग करने जाना है. आई विल डू 300 किलोमीटर कंपटीशन है, बट आई विल ट्राई एंड लॉग इन बिटवीन. But then I thought about doing a silence meditation of 15 hours tomorrow while cycling. I'll not talk to anyone and I'll cycle. So hopefully that will keep me into silence mode and practice this silence. But definitely next events, whenever you are hosting or someone else is there, I'll come and join you guys. Yes, definitely. आपको गेम्स, आपको आना ही है गेम्स में. ओके, तो आप अपना टीम सिलेक्ट कर लीजिएगा और आप अपना नाम ऐड कर दीजिएगा. All right, thank you so much, Amit. Very nice to see you. All the best for tomorrow. जो भी आप कर रहे हो, he is very much enthusiastic about cycling,
and he is very much health conscious. तो वो करते रहते ये काफी. तो yes, all the best, Amit. Nice And to we see you, will Amit have. bhai. Actually, आपके बारे में हम ज्यादा सुना है. I don't know how to cycling 50 kilometers करते हैं, but वो secret क्या है? इस It will बारे में हम happen, sir. बात Practice करेंगे. थोड़ी थोड़ी. Cycling पर. इस बारे में We हम can बात talk on some other करेंगे. day. Yes, we will have a special session. Amit, आपका pending था वैसे भी. और अभी the last person, Dimple ji, I have been trying to find her. Dimple ji, please unmute yourself. Hello. Yes, Dimple ji, please share your story. Hi, everybody. Hello. I guess actually I'm the last person to come in and disturb everyone. So it's okay. We can talk or discuss about it tomorrow. It's fine with me because I guess everyone has got delayed. So what do you want to talk about, Dimple ji? Yeah, actually it's again about the self-talk and repetitively getting again and again trapped into this habit. It's trying to meditate, trying different things past 1.5 years, but unable to actually overcome it. Yeah, somewhere I even tried chanting recently. Somewhat it helped me, but then again, 4-5 days I did it diligently. But then I don't know, somehow again I missed it and again came back to the same thing. So my major issue is like when I sleep at night, I go to sleep chanting God's name. Since many years I'm doing this practice. So I fall asleep very nicely. But then after 4-5 hours something, I will wake up and then I'm unable to sleep further. So I keep on turning and tossing and then these thoughts, because it's all lonely. So, and I don't want to get up and disturb my family because it's for them it's a little early hour. So by 5 o'clock, once I wake up, then in my bed I start getting all these thoughts repetitively, and I'm unable to even sleep again and self-talk, all these issues. So trying to find out what should I do. I tried then in the morning. I try to do that same prayer which I do at night, but then it doesn't help me. Always confusion. Your voice have cracked. So you are saying that you are not able to feel that peace. You're not able to practice that you used to be able to do earlier. Are you saying that? 1 second, I will just come down on the without this. Hello, can you hear me now? Yeah, it is, I think, clearer. हाँ बोलिए. Yeah, the thing is there were some certain family issues actually with my children itself, and that has actually traumatized me 4-5 years back. It was like some issues, so that has traumatized me very badly. Like I was somewhere feeling that though I have my out of 3 kids, I have 1 kid still staying with me, and his dad is there. But at the time, I felt like without any purpose, my elder son has moved out, left us, and I started feeling very lonely. And then I started getting fearful thoughts that tomorrow, like no one would be there, everyone will start leaving. The younger one had moved to hostel, and now the third daughter is there. Very soon, she will also leave. So I start feeling these types of fears. Like once everyone moves out, then we are into a world very lonely. Who would take care of us? Because obviously we are gradually aging as well. So these thoughts keep on triggering again and again, and that is again creating a big tension for me. Like I'm trying to come out from these thoughts, but then again I get stuck up somewhere. Some or the other day it gets triggered, and it again pulls me back. Okay. So you have okay, I'm understanding. So have you tried to talk about it to a professional? Have you tried to seek help and support from anybody? No. All right.
So I would recommend that you talk to a professional on one-on-one basis, because आप एक ग्रुप में फिर ये डिस्कशन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है. If you talk to somebody one-on-one, then you'll be able to get a better idea of how to handle it. What I can see, you need to release those fears which have been developed inside you. And for that, you need a little bit of support, and you need to heal those fears. And for that, what technique would suit you the best? That when you talk, consult a professional, that person would be able to help you more. Yeah. So there are different types of professionals. If you are more keen on a spiritual path, आप एक spiritual counselor के साथ बात कर सकते हैं. If you're more keen on a mental part, you can talk to a counselor who deals with the mental health. All right. So that I would like to say. Meanwhile, as Kamal sir said, do you practice pranayam? Yeah, I Pranayam do. आप करते हैं? Yes, All yes. right. But then So please. when I practice pranayam at that time, I'm again fully loaded with those thoughts. So sometimes I do it very well, but then sometimes again those keep on relapsing. Not that Just perfectly. watch yourself, I would say. When the thought enters, just become aware that, okay, the thought has come. What thought it is? It is this, the fear thought. Okay, let it go. Let it just play. You focus on your breath. That has to come with practice. Okay, तो इसके लिए आपको ये टेक्निक को थोड़ा सीख के करना पड़ेगा. So that's why I'm saying that you consult a professional. Are you a part of our mental health group as well? Or 5am movement? No. Are you? All right. You can talk about it in the mental health group also. Palak, will we be able to share the mental health group link here? And if she has joined the community, now you can see in the community, you can request to join the group. It's mental You're the health part sharing of- group alive as one on WhatsApp. On WhatsApp. You're a part of link our is there? community, right? आप community this का part. part हो ना हमारे? Yeah. 5am movement, I'm the part, but not that mental health you're talking about. So when you go to the community, you will see उस community के अंदर क्या-क्या groups हैं. उस group में आपको दिख जाएगा mental health. You please join that group. You please share your concern. There are many people who are there to help, and definitely you will get some support there. Okay? Okay. Yeah? And the counseling you're talking about, so what are they called? Like, if I They're want to called advocate counselors itself. They're called counselors itself. only counselors. Okay. Yeah. You can say therapist, counselor, and then you'll get a series. Where are you based? Where are you from? Maharashtra, Mumbai. Oh, all right. There'll be many in Mumbai. There'll be many. You can write about it in the mental health group. Ojas is also into all these, so he can also reply to you. Yeah. So the moment you post it, I'm sure you'll get help and you'll get an answer. Yeah. Okay, sure. I'll do that. Okay. Thank you And meanwhile, please practice journaling also. आपके जो thoughts है वो आप बस लिख दीजिए. जैसे निकलते जाए उसको लिखते जाइए without any edit or anything. Then you see how light you will feel. Yeah. Okay. These are the two things that I can recommend यहाँ पे based on whatever I have heard. Okay. All right then. It's 444. Beautiful number. Thank you, Tanvee. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for coming, and thank you everybody for joining us in this beautiful, most awaited topic, sharing circle, power of silence पे हम और बातें करेंगे. बहुत लंबा हो गया. We would apologize अगर किसी को भी problem हुआ उससे, but we just wanted everybody to get the space to open up. Yeah. So please share your experiences with us in the accountability group. And let us know if there is any way we can improve things. And Mahesh ji has shared the link of mental health group here. So anybody who wants to join the mental health group can please join in this group. Yeah. Dimple ji, आप chat पे देख सकते हैं. Yeah.
Yes, yes. Okay? I have just, yeah, I've requested that page. All right, great. Okay, all right then. Thank you very much. We look forward to see you tomorrow in the 5 a.m. session, as well as the most exciting part of the whole 5 a.m. thing is the Tanvee, games. 3 hours So session kal from closing early. At least 3 hours. ji? We expect at least 3 hour session from you, but you are closing little bit early. Yes, I go much beyond the time anyways. Next time हम sharing circle 3 घंटे का ही रखेंगे, okay? Let's see. तन्वी, उनका कहना ऐसा है कि 3 घंटे मुझे देना, बाकी के आवर्स तुम ले लो, ऐसे। वो अच्छा आइडिया है महाराज का। करना पड़ेगा एंड वी होप कि हम सबको ऑफलाइन भी मिल सके, हम मीट एंड ग्रीट करें, फिर वहां पे तो फिर जितना समय बात करना है हम बात कर सकते हैं, है ना? तन्वी जी, can I know साउथ from इंडियन है where ना, are you? इसलिए ऐसा होगा। सॉरी, From where are साउथ you? इंडियन है ना, Where are you located? ज्यादा बात करता है। सर, आप महाराष्ट्रियन भी बहुत बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र आई एम फ्रॉम गुवाहाटी, आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, तो या we don't talk much, we are not very talkative people. So yeah. Right. Okay, then it was lovely seeing you all. Thank you for giving me the opportunity to host today. And we look forward to seeing you tomorrow at 5 a.m. and the most exciting part, which is the games. I hope आप लोग सबने गेम्स के लिए रजिस्टर किया हो और आप सबको आपके टीम्स पता हो। अगर नहीं तो प्लीज रजिस्टर कीजिए और कल 2:30 p.m. को हम मिलेंगे। All right. Thank you very much, everybody. Thank you, Kamal ji. Thank you, Tanvi, for the beautiful session. Thank you. Thank you, Monali, for your participation. Thank you. Yeah. Tanvi ji and Thank you, ma'am. everybody over Thank you here. so It's a much. lovely bunch of people. तन्वी जी, आप Wow. महेश भाई Thank को you. हैप्पी एनिवर्सरी विशेष नहीं दिया ना? दिया महेश मैंने भाई केक भी नहीं दिया। पर्सनली मैसेज किया है उनको। ऐसा नहीं चलता, पब्लिक में विश करना चाहिए। कैंडल्स अभी नहीं है केक मेरे भेजो पास, महेश जी। लाइट होगा, लाइट होगा, मैं लाइट के साथ करती हूँ। वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं महेश जी। बट इस लाइट में आप भावना जी का फ्रेंड जैसा देख रहे हैं, वो था। Okay. All right, 4:48 p.m. I did not understand the joke, but I think we should leave now. Yeah.